नाम है। और यदि आप इनके रेड पॉइंट्स की बात करते हैं तो इन्होंने 217 रेड पॉइंट्स क्लेम किए हैं। 321 रेडें जरूर लगाई है। और सुपर 10 देखिए अर्षित, 13 इन्होंने सुपर 10 लगाई है। 67.6 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है, एवरेज रहता है। तो जो सक्सेस रेट है वो ये खिलाड़ी आपकी टीम को सक्सेस में निकाल के देता है। और वो कारण भी है कि अपने दोनों के दोनों मुकाबले इस टीम ने चैलेंजर राउंड में अपने नाम किए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इससे पहले जब वहाँ पर टॉस होता हुआ नजर आया तो टडोबा टाइगर्स ने यहाँ पर जरूर टॉस जीता। और आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में उन्होंने अपने कोर्ट को चूज करते हुए नजर आए। और आज वहाँ पर आपको अनुज कुमार प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे टडोबा टाइगर्स का। ये बड़ा प्रश्न होगा निश्चित तौर पर। मोहित जयपाल शायद इंजर्ड होने के चलते वहाँ पर आपको इस क्रम में मौजूद नहीं होंगे। और जिस तरह की हम दोनों ही टीम्स की यहाँ पर बात कर रहे थे, हम निश्चित तौर पर टीम्स के स्टेट्स की यहाँ पर वार्तालाप करेंगे आयुष आपके साथ कि किस तरह का सफर रहा है दोनों ही टीम्स का। टडोबा टाइगर्स की शुरुआत करते हैं आपसे। टोटल मैचेस की बात करेंगे ना हर्षित, तो 24 मुकाबले खेले हैं, 10 में जीत मिली, 12 में शिकस्त इनको सामने आई है। और सबसे बुरी चीज़ जो अभी तक ये हुई है कि जो चैलेंजर राउंड स्टार्ट हुआ उसमें अभी तक एक भी मुकाबला इन्होंने जीता नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, जीत अभी तक नसीब हुई नहीं है, परंतु इस खिलाड़ी पर दारोमदारी रहेगी। और हम्पी हीरोज की बात कर लेते हैं, 14 मुकाबले जीते, 9 मुकाबले हारे। अच्छे अंदाज से यहाँ पर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगता है कि 24 इन्होंने टोटल ओवरऑल मुकाबले खेले हैं। और बहुत ही जल्द अब इस मुकाबले की शुरुआत की तरफ हम जाएंगे। एक बहुत ही ग्राफिक से परिपूर्ण आप सभी को काउंटडाउन नजर आएगा और उसके बाद इस मुकाबले की शुरुआत की जाएगी। तो दिल थामे रखिएगा, अपनी अपनी सीट की पेटियों को जरा बांधे रखिएगा, क्योंकि संडे स्पेक्टेकुलर फंडे होने वाला है आप सभी के लिए। चलते हैं यहाँ पर बहुत ही जल्द सीधा काउंटडाउन की तरफ और उसके तुरंत बाद गेम में हम आपके साथ नजर आएंगे। हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं टडोबा टाइगर्स वर्सेस हम्पी हीरोज के मध्य मुकाबले में। रेड करते हुए यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं हम्पी हीरोज के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी नितिन धनकर। इस मुकाबले की शुरुआत करेंगे। ऑफिशियल एम्पायर्स ने यहाँ पर वो ऑफिशियल आप सिग्नल देखना चाहेंगे जब इस मुकाबले की शुरुआत होगी। और आयुष, अभी तक किस तरह का आपका संडे रहा है और आपके क्या प्लान है अब आने वाले समय में? हर्षित, बहुत ट्रैवल भरा था ये संडे, जो लास्ट नाइट थी पूरी ट्रैवलिंग में निकल गई। उसके बाद पूरी तरीके से सेट है अभी कबड्डी, उसके बाद में जो क्रिकेट है उसका भी लुत्फ उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ बात करते हैं नितिन की इस रेड की। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है हर्षित अपनी टीम के लिए, क्योंकि जब भी रेड डालने के लिए जाते हैं कन्वर्ट करने की कोशिश होती है। मुकाबले की पहली रेड नितिन आए हैं रेड करने के लिए। 7 खिलाड़ी मैच पे आपको मौजूद नजर आएंगे। हाउसफुल है, बोनस लेने का प्रयास जरूर किया, क्या बोनस चुरा लिया है। जिस रफ्तार से पास जरूर आए थे ना उस सेंटर लाइन के हर्षित, लगता है कि खिलाड़ी चुनौती पेश करने के विचार से आया है आज। जी, और आए भी क्यों ना, क्योंकि चैलेंजर राउंड है जहां पर बहुत सारी चुनौतियां आपको एक दूसरे को देनी होगी। जरूर वहां पर बोनस नहीं मिला है। अनुज कुमार आज टीम का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और सचिन जगबीर जरूर वहां पर मौजूद थे, परंतु शायद कोच उन पे एक वैसे ही वो थोड़ा सा उस तरह की मोमेंटम में आपको नजर नहीं आ रहे हैं। और आप यही चाहेंगे उन पर कप्तानी की दावेदारी और अतिरिक्त बोझ न दिया जाए, जिसके चलते अनुज को यहाँ पर मौका मिला है। और बोनस यहाँ पर हम्पी हीरोज को वहाँ पर मिला था पिछले दफे, ऐसा नजर आ रहा है। और टडोबा टाइगर्स भी उसी तरह के क्रम के प्रदर्शन को आगे ले जाना चाहेगा। सोनू लथवल अब जाते हुए लेफ्ट हैंड के साथ ये शुरुआत करते हैं और दोनों ही टीम्स ने अपना खाता खोल दिया है बोनस के साथ। एक पॉइंट दोनों के स्कोर कार्ड पे झलक रहा है। क्या यहाँ इस रेड में एक और पॉइंट झलकेगा? सोनू लठवाल अपने परफॉर्मेंस से यहाँ कुछ ना कुछ अनोखा करने की कोशिश जरूर करेंगे। डुबकी लगाने का प्रयास, और मुझे लगता है 3 पॉइंट मिलेंगे इन्हें, यदि डिफेंडर्स को वहां ब्लॉक करने में सफलता मिली नहीं है। नहीं 2 पॉइंट। एक जो खिलाड़ी थे कॉर्नर के वो ऊपर से निकल गए। यहाँ इन डेप्थ के अंदर पता करते हैं किस तरह से हुआ। कॉर्नर और इनकी जो चेन थी, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को थोड़ा सा संजोआ और वहां से अंकित धुल और रिंकू धुल के बीच में से बाहर निकल के आया ये खिलाड़ी और साथ ले आया 2 पॉइंट। हम्पी हीरोज का स्कोर 3-1, 2 अंकों का ये फासला हर्षित। जी हाँ बिल्कुल। और ये लीजिए आप, जिस तरह के सफर की हम बात करते हैं, बिल्कुल भी वहां पर उस तरह के पक्ष में जा नहीं रहा है इस खिलाड़ी के लिए। लगातार यहाँ पर इन्हें शिकार बनाया जा रहा है। और किस खिलाड़ी ने बनाया है इन्हें शिकार? रोहित। इन्होंने पिछले मुकाबले में इनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा था, इस बार सरप्राइज लेकर आए हम्पी हीरोज। ये बड़े खिलाड़ी हैं। आयुष, इस खिलाड़ी पर आप नजर बनाइएगा। रोहित रघु एक बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। और टडोबा टाइगर्स वो कमजोर टीम अभी नजर आ रही है, जिस तरह से लगातार गलतियां कर रहे हैं। इस बार शायद वहां पर क्या हर्ष मौजूद थे, नए खिलाड़ी को यहां पर इंक्लूजन मिला है स्टार्टिंग 7 में, क्योंकि आज मोहित जयपाल नहीं है, विनय राजेश नहीं है। वो जो प्रॉपर
एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है कवर में। जिन्होंने सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स लिए हैं टडोबा टाइगर्स के लिए वो नहीं है, पहले से ही कॉर्नर्स वहां पर एक तकलीफ भरा पॉइंट था, अब कवर्स भी आपको नजर आएगा। पर देखना होगा एक न्यू स्टार्ट जरूर है टडोबा टाइगर्स के लिए। शुरुआत जो है वो इतनी अच्छी रही नहीं है अर्शित टडोबा टाइगर्स के लिए। शुरू में ही अपने डिफेंडर्स को गंवा दिया, जो आपके मेन प्लेयर होते हैं जो कॉर्नर की पोजीशन संभालते हैं वहां पे अब हर्ष कुमार मौजूद है जो जनरली कवर की पोजीशन पे आपको खड़े नजर आते हैं। ये खिलाड़ी खड़ा नहीं रहेगा, नाम इनका विशाल चहर है और रेड करने जाएंगे, 1 अंक लेके आएंगे। स्कोर में थोड़ा सा तो इजाफा होगा हर्षित। ये थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास कर रहे थे कॉर्नर के खिलाड़ी के पास, उसी के बाद कवर के खिलाड़ी को जर्सी नंबर 6 को बनाया इन्होंने अपना निशाना और वहां बार कर दिया अपने ओपोनेंट खिलाड़ी नितिन देसवाल को। जी हाँ, ओपोनेंट टीम के कप्तान को यहाँ पर एक बहुत अच्छा हैंड टच किया है और अब पहले एक टैकल कर चुके हैं और अब रेड में जाएंगे, परंतु टडोबा टाइगर्स का डिफेंस कहेगा कि एक नई एनर्जी के साथ हम शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिंको ने डाइविंग एंकल होल्ड किया, देखिए बहुत अच्छा डाइव लगाया। जैसे ही देख रहे थे कि मोमेंटम थोड़ा सा उनका मिड लाइन की तरफ जा रहा है, जैसे ही देखा कि थोड़ी सी यहाँ पर नजरें हटी है और सिर्फ देखिए सड़क पर ही नहीं, आप कबड्डी में भी कहते हैं कि आपकी नजरें हटी और दुर्घटना घटी। इस बार दुर्घटना घटी, कैजुअलिटी हो जाएंगे और इसीलिए कबड्डी में हमेशा कहा जाता है कि आप कभी भी कबड्डी के मैट पर कैजुअल नहीं हो सकते, अन्यथा आप कैजुअलिटी में तब्दील हो जाते हैं। हर्षित देखिए, यदि खिलाड़ी अपने काम से काम रखे तभी वो काम का रहता है, वरना उनका काम तमाम हो जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये है कि जो कॉर्नर की पोजीशन है वो वहां संभाल के रखी थी रिंकू धुल ने, जो रेगुलरली अपनी टीम के लिए कॉर्नर पोजीशन के ऊपर प्लेस रहते हैं। जब इससे पिछली बार टडोबा टाइगर्स ने पॉइंट लीक किया था तो उस पोजीशन पे हर्ष थे जो कि कवर की पोजीशन पे खेलते हैं। तो यदि सही खिलाड़ी सही समय पे सही जगह पे खड़ा है तो हर्ष कुछ इस तरह का होता है। एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, खिलाड़ियों ने कंबाइंड एफर्ट के साथ कॉम्बिनेशन टैकल दिखाते हुए डैश कर दिया, लॉबी से थोड़े से दूर चले गए नितिन और 1 अंक और मिलेगा टडोबा टाइगर्स को। हर्षित, पावरफुल एंकल होल्ड, ये कहते हैं पावरफुल एंकल होल्ड, सही एग्जीक्यूशन, सही इनिशिएशन और उसके बाद सही तरह से यहाँ पर ग्रिप, परफेक्ट यहाँ पर ये होल्ड था। और अब एक अच्छी संकेत यहाँ पर टडोबा टाइगर्स के लिए, दोनों कॉर्नर्स को यहाँ पर पॉइंट मिले। विशाल चहल बिट्टू के पास जाकर पॉइंट लेने का प्रयास कर रहे थे, बिट्टू से आप बच के रहिएगा और इनका आयुष धीरे धीरे इनका भी नामांकन किया जाएगा। आज के इस मुकाबले में इन्हें भी यहाँ पर हम एक सोच के साथ आए कि इस बिट्टू खिलाड़ी को भी एक नया नाम दिया जाए, जैसे प्रतीक धाकड़ भैया हमने दिया है, साथ ही साथ वहाँ पर और कुछ खिलाड़ियों को चाहे हम जय भगवान का वो भीम नाम हो, उसी तरह से बिट्टू जिस तरह के डिफेंडर हैं आप उनसे प्रदर्शन देखना चाहेंगे। और द हल्क, अब सोनू लथवाल यहाँ पर रेड पर है। आयुष, इस खिलाड़ी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं अपनी टीम के लिए। जब आपकी टीम को पता है कि आपके पास में एक ही खिलाड़ी के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए, तो फिलहाल यहाँ तो है लॉबी का इस्तेमाल कर लिया, मुझे लगता है बिना किसी खिलाड़ी को छुए। यहाँ देखना होगा, हाँ लॉबी के ऊपर पांव टच हुआ, इसी के चलते सेल्फ आउट हो गए। यही होता है ना हर्षित, जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, जब डिफेंडर्स आपको रोक नहीं पा रहे लेकिन लक आपका साथ नहीं दे, तो ये होता है। यहाँ डू और डाई की सिचुएशन, सुपर टैकल भी ऑन है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। अपनी हीरो के डिफेंस की यदि बात करी जाए तो जर्सी नंबर 4 में बिट्टू मौजूद है, नंबर 7 के अंदर तकलीफ भी, और उनके साथ में एक और खिलाड़ी ने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, डबल हाई होल्ड जिसे आप एग्जैक्टली अगर टर्न करेंगे तो, और उसके बाद तीनों डिफेंडर्स ने एक साथ एफर्ट करके 2 पॉइंट लिए सुपर टैकल के रूप में। हर्षित, जी हाँ बिल्कुल, और ये देखिए आप वैसे ही वहाँ पर सचिन के लिए इतना अच्छा मोमेंटम जा नहीं रहा था और इस बार डू और डाई रेड में गए और निश्चित तौर पर आसानी के साथ वहाँ पर सुपर टैकल किया लेफ्ट कॉर्नर हम्पी हीरोज के लिए। और इससे पता लगता है कि यहाँ पर गरीबी में आटा गीला, यानी कि जिस तरह से वैसे भी उनका मोमेंटम इतना अच्छा जा नहीं रहा है, उसके बावजूद वहाँ पर डू और डाई रेड में गए, एक अच्छा कॉन्फिडेंस दर्शाए खुद पर, और यही मैं देखना चाहता हूँ। टडोबा टाइगर्स अगर अच्छा कर रही है, ये अच्छे संकेत हैं। सचिन जगबीर बड़े मुकाबलों में उनका बड़ा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण रहेगा और एज एन मेन रेडर उन्हें खेलना होगा। अनुज कुमार एक शानदार रेडर है, विशाल चहल शानदार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम क्यों इतना ज़्यादा सचिन जगबीर की बात करते हैं? क्योंकि उनके पास 225 रेड पॉइंट्स भी हैं और उनके पास वो स्किल्स है। इस बार जरूर यहाँ पर 7 नंबर जर्सी को शिकार बनाएंगे संदीप, जिन्हें पिछले मुकाबले में अपनी टीम के लिए बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला था, कबड्डी का कमाल अवार्ड भी लेकर गए थे। इस बार अभी तक इस मुकाबले में ज्यादा कुछ छाप छोड़ने में नासमर्थ रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण हर्षित मुझे जो लगता है कि उनके साथ में जो कवर के खिलाड़ी हैं उनकी बार बार कमी उन्हें महसूस हुई है, क्योंकि बाहर पे रनिंग एंड टच के तौर पे बार बार उनको शिकार बना लिया जाता है। सिंगल हैंडेडली सोलो टैकल्स थोड़ा सा टफ होता है और उसी के चलते पॉइंट थोड़े से लीक करने का प्रयास कर देते हैं और कभी कभी चले भी जाते हैं पॉइंट्स, आप उन्हें रोक नहीं पाते। नितिन देसवाल अगली रेड पे, डिफेंस के अंदर 7 खिलाड़ी है लेकिन एम्प्टी रेड से ही संतुष्ट रहना होगा और अपने डिफेंस के ऊपर एक बार फिर निर्भर करेंगे। हर्षित, अच्छी चीज ये है सचिन एक बार वापस रेड करने आए,
3 का वहां पे डिफेंस है, इसका मतलब सुपर टैकल ऑन है। क्या यहाँ पर पिछली बार की तरह पकड़े जाएंगे या सचिन अपनी टीम के लिए इस बार पॉइंट निकाल के लाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और वक्त ज्यादा रहा नहीं है, 18 सेकंड का समय बचा इस रेड के अंदर। सचिन अपनी कैंप को यूटिलाइज कर रहे हैं और वापस एक एम्प्टी रेड के साथ गए। हर्षित, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए था, या तो डू और डाई मान लेते, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी। 3 का डिफेंस है, पॉइंट लाते तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा आयुष। परंतु देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ इसलिए था कि सचिन जगबीर अगली रेड के लिए खुद भी गए, और ये अच्छा है, समय व्यतीत करें, ये अच्छा है, क्योंकि जाकर हर बार पॉइंट लाना उतना आवश्यक नहीं होता है आयुष, जितना आप रेड पर अपने आप में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको मैट पर खड़ा रहना होता है। इस बार जरूर अक्षित गए हैं डू और डाई रेड में, पूरी तरह से अपने बोनस पर विश्वास जता रहे हैं, पूरी तरह से अपने बोनस पर विश्वास जता रहे हैं, और बड़ी आसानी के साथ मैं ये देखकर थोड़ा सा चकित रह गया कि बड़ी आसानी के साथ वहां पर राइट कॉर्नर अंकित ने यहाँ पर बोनस दे दिया, वहाँ पर अक्षित को इसी तरह से उन्हें सब्स्टिट्यूट कराया गया था कि जाइए अगली रेड डू और डाई रेड आने वाली। अच्छा कार्य यहाँ पर करते हैं अक्सर रमेश नरवाल बतौर कोच, और कर मंजीत चिल्लर जब आए थे, जब उन्होंने भी इन खिलाड़ियों को देखा, और हम्पी हीरोज के नितिन धनकर से बड़ा प्रभावित हुए थे, बिट्टू से बड़े प्रभावित हुए थे, और जिस तरह से नितिन देसवाल प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और उन्होंने अंत में जाते जाते यही कहा कि बहुत अच्छी यहाँ पर ये फैसिलिटीज दे रहा है युवा कबड्डी सीरीज, और इस बार क्या उतनी ही अच्छी तरह से यहाँ पर भाप पा रहे हैं अनुज कुमार। जरूर शायद ऑफिशियल्स यहाँ पर कुछ निर्णय लेना चाहेंगे, क्या 2 पॉइंट हो सकते हैं, या फिर अनुज शायद वहाँ पर आउट भी हो सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हवा में जरूर है, हवा में यहाँ पर जरूर से देखना हो क्या ऑफिशियल्स का यहाँ पर अंतिम निर्णय होगा, और बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों जी ऑफिशियल रिव्यू यहाँ पर लिया गया है। रिव्यूज का यहाँ पर सिस्टम में आयुष आपको भी बताना चाहूंगा और हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सर्वाइवल राउंड में नहीं था, बूस्टर राउंड में नहीं था, अब चैलेंजर राउंड में ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर रिव्यूज रखा गया है कि अगर हमारे ऑफिशियल्स को किसी भी निर्णय में थोड़ा सा भी यहाँ पर ऊंच नीच लगती है तो वो जांच सकते हैं, वो थोड़ा सा देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर एक थर्ड रेफरी आपके पास होते हैं जो स्क्रीन के आगे निरंतर आपको देख रहे होते हैं। परंतु ये रेफरीज का जो कार्य रहा है अभी तक बड़ा प्रशंसनीय रहा है आयुष, जिस तरह से प्रशंसा के पात्र हैं रेफरीज, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? बिल्कुल हर्षित, और सबसे अच्छी चीज़ ये और हुई है कि चैलेंजर राउंड में जो रेफरीज है, जो ऑफिशियल्स है, वो खुद के ही निर्णय को चैलेंज कर रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। अभी तक जितने भी जो माइनर डिसीजंस थे वो उन्होंने खुद ने लिए, अब टेक्नोलॉजी का सहारा मिला, यानी कि सोने पे सुहागा। जो काम लगातार आप बहुत अच्छे से करते आ रहे थे उसके ऊपर एक और इजाफा हुआ, और इजाफा तो यहाँ एक और पॉइंट का भी होगा, क्योंकि वहां पे अंक दिया गया था। देखिए सचिन डाइव लगाने का प्रयास था, माफ कीजिएगा, अनुज वहां पे थे, उन्होंने डाइव लगाई और आराम से अपनी जो सेंटर हाफ है उसको पार कर लिया। यहाँ एंकल होल्ड का प्रयास, नाकामयाबी मिलेगी, नाकामयाबी मिलेगी टडोबा टाइगर्स के डिफेंड को। इस तरह से डिफेंडर्स इजी पॉइंट गिव अवे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रेडर जो है वो ऑलरेडी आप पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन देसवाल रेड करने के लिए आए थे और अपना पहला रेड पॉइंट निकाल के गए हैं। हर्षित, इन्हीं गलतियों की मैं बात कर रहा था आयुष की गलती यहाँ पर एक बार फिर से दोहराई वहाँ पर राइट कॉर्नर अंकित ने, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आप जब अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, जब आप हाईलाइट देखेंगे इस मुकाबले की, तो आप यही सोचेंगे कि यार इस परिस्थितियों से मुकाबला बदल सकता था। देखिए अभी तो हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, परंतु जैसे जैसे मुकाबला आपके थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद आते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा मौका था हम्पी हीरोज को ऑल आउट करने का, परंतु आपने उन्हें एक रिवाइवल दिला दिया। और रिवाइवल किसका दिला दिया है? रोहित राघव जैसे खिलाड़ी अब आपके लिए मैट पर आ चुके हैं हम्पी हीरोज के लिए, तो अभी थोड़ा सा कठिन हो चुका है। यहाँ पर टडोबा टाइगर्स के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वहां से एक ऑल आउट की तरफ धकेल पाए हम्पी हीरोज को, परंतु उस मौके को बुना नहीं पाया है टडोबा टाइगर्स का टीम। और हम्पी हीरोज हमेशा जब जब हमने इन्हें पिछले 2 मुकाबलों में देखा है आयुष, आपने भी जरूर शायद एब्जॉर्ब किया होगा सिचुएशन को, कि हमेशा पहली दफे ऑल आउट की तरफ हम्पी हीरोज जाती है, परंतु उसके बाद ऑल आउट होती नहीं है और लगातार विपक्षी टीम को ऑल आउट करती है। ये उनकी एक खासियत है, चाहे नितिन धनकर हो, चाहे बिट्टू हो, चाहे नितिन देसवाल हो। हर्षित, यही खासियत होती है एक बड़ी टीम की कि सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, आप गिव अप नहीं करें। और ये होता है परस्यूट करने के लिए आया, बॉक लाइन को पार भी कर लिया। पिछली बार अपनी पॉइंट को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, रोहित राघव रेड पे आए थे और मैच एम्प्टी रेड के साथ चले गए, क्योंकि जानते हैं कि जब टडोबा टाइगर्स के जो रेडर है वो रेड करने के लिए आएंगे तो जो सिचुएशन होगी वो होगी विशाल के लिए डू और डाई की। सुपर टैकल यहाँ पर ऑन है, टीम का यहाँ डिफेंडर्स को भेजना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे डैश करने के प्रयास में क्या कामयाबी मिली है? क्या कामयाबी मिली है हर्षित? नहीं, 1 पॉइंट लेके चला गया टडोबा टाइगर्स के लिए विशाल। थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास कर रहे थे, कॉर्नर के खिलाड़ी जो बिट्टू थे
वो अपना जो संतुलन है वो बना नहीं पाए। उसके बाद जर्सी नंबर 6 के रूप में उसके साथी खिलाड़ी नितिन देसवाल ने अटेम्प्ट करने का कोशिश की, जिसमें सफलता मिली नहीं। चलिए सिचुएशन तो हर्षित यहाँ पे भी डू और डाई की है। डिफेंस के अंदर खिलाड़ी पूरे के पूरे साथ मौजूद है, यानी कि यदि आप बोनस क्लेम कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। आराम से, इससे आसानी से बोनस निकाल नहीं सकते थे हर्षित। जी हाँ, बोनस दिया है, परंतु मैं अभी भी तारीफ करूंगा यहाँ पर टडोबा टाइगर्स के डिफेंस की, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर ऑल आउट करने का मौका रहेगा। अगर आपने कहीं भी रोहित को यहाँ पर टच पॉइंट दे दिया तो एक बार फिर से जो ऑल आउट करने का जो मौका है वो आपसे दूर चलक जाएगा। अनुज कुमार ने देखिए बिट्टू को यहाँ पर एक बार फिर से अपना शिकार बनाया है। बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर राइट कॉर्नर बिट्टू मौजूद थे, वहां पर गए, आसानी के साथ उन्हें हैंड टच किया। और इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैं तारीफ कर रहा था टडोबा टाइगर्स की। चलिए डू और डाई रेड है, आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रेडर कुछ आवश्यक करता है तो यहाँ पर आप कुछ जाइए, परंतु इस बार रोहित राघव देखिए इकलौते अब बचे हैं मेंबर अपनी टीम के लिए कोर्ट पर। इन्हें एक बार फिर से शायद बोनस आसानी के साथ दिया जाएगा। और ऑल आउट क्या होता है देखिए, हालांकि ज्यादा पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, आयुष बराबरी पर लगभग स्कोर जाएगा अगर ऑल आउट होता भी है। परंतु जिस तरह से बहुत आसानी के साथ, किसका इंतजार कर रहे थे टडोबा टाइगर्स के कवर्स, किसका इंतजार कर रहा था वहां पर राइट कॉर्नर का खेमा। आयुष, आप किस तरह से इन परिस्थितियों को दर्शाना चाहेंगे? क्या लॉबी में भी गए थे? हर्षित एकदम डीप खड़े थे। मुझे जो लगता है वो ये था कि जब रेड करने के लिए जाएंगे तब पॉइंट लेके आएंगे, ये उनकी मानसिकता रही होगी। और इसी के चलते 2 अंक गंवा दिए, एक तो बोनस भी गया और एक अपने साथी खिलाड़ी को रिवाइव भी कर लेंगे। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कबड्डी के खेल में। और कॉर्नर के खिलाड़ी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पोजीशन होती है वो कॉर्नर की होती है, उसके ऊपर आप इस तरह से इजी गिव अवे दे नहीं सकते। रिंकू दुल, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो वो वहाँ पे मौजूद थे और उनको बैक किक करके एक पॉइंट अपनी टीम के लिए क्लेम किया और एक साथी खिलाड़ी को रिवाइव भी किया है हर्षित। इसी के साथ सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा जी। और ये एक जरूर जो हमें दृश्य देखने को मिला था, वहां पर लॉबी का जरूर कुछ खिलाड़ी कह रहे थे, वही यहाँ पर थोड़ा सा चर्चाजनक विषय था। परंतु चलिए अनुज कुमार इस बार शायद यहाँ पर ऑल आउट पुश भी हो जाएगा और आसानी के साथ चलिए यहाँ पर 2+2 क्या 4 पॉइंट्स मिलेंगे या फिर सिर्फ संदीप नरवाल को शिकार बनाया, देखना होगा। सब्स्टिट्यूट कर अंदर बुलाया था, जी हाँ, महज एक यहाँ पर पॉइंट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। रोहित राघव अभी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनका शिकार, जी हाँ, उन्होंने भी मना किया कि नहीं। और रोहित राघव के पास एक बार फिर से मौका है, जरूर अब अपनी टीम के लिए रिवाइवल फिर से लाना होगा। पिछली बार कवर्स और कॉर्नर्स, लगातार एक बार फिर से बोनस। जितना ज्यादा लंबा हम्पी हीरोज अपने लिए ऑल आउट खींचेगा उतना ज्यादा कठिन परिस्थितियां यहाँ पर टडोबा टाइगर्स के लिए उत्पन्न होगी। आयुष, हर्षित, उससे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि बोनस तो कम से कम क्लेम कर रहे हो। क्या या सुपर डुपर रेड लगा सकते थे? नहीं, सेंटर लाइन से थोड़ा ज्यादा दूर है और इसके चलते पॉइंट तो नहीं मिलेगा। 1 अंक बोनस का जरूर ले जाएंगे, 1 अंक टडोबा टाइगर्स को मिलेगा। जहां तक मैं श्योर हूं, नहीं, यहाँ तो सुपर डुपर रेड दे दिया हर्षित, सुपर डुपर या शायद उससे भी ऊपर। 3 खिलाड़ियों को अंदर लेकर आ गए हैं राघव। यहाँ डुबकी लगाने का प्रयास था, सेंटर लाइन से मुझे तो लग रहा है कि थोड़े से दूर उनका हाथ है हर्षित, बाकी आपको क्या लगता है? देखिए हाथ वहां पर दूर था, परंतु जिस तरह से उनका जो लेग था वो जरूर यहाँ पर एक निर्णायक विषय रहेगा कि किस तरह से उनका, क्या वहां पर फुट उन्होंने क्रॉस कर दिया था मिड लाइन का, क्या वहां पर हवा में था या फिर फुट उन्होंने क्रॉस कर दिया था। ये एक बार फिर से हमारे रेफरीज कंसर्न कर रहे हैं। जी, उन्होंने पैर जरूर आगे निकाल दिया था। डिफेंडर के खिलाड़ी को टच किया गया, डिफेंडर थे जिनका पांव जो है सेंटर लाइन को पार किया गया, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। रेडर का हाथ या पांव वो पार होना चाहिए। यहाँ देखते हैं कॉर्नर के खिलाड़ी को अपना विचार बदला, क्योंकि वहां पर आयुष देखिए अगर डिफेंडर का पैर भी अगर बाहर निकल जाता है ना, ये देखिए ये यहाँ से इन्होंने पैर निकाला और यहाँ से अभी पैर निकालेंगे एक बार पुनः। ये देखिए इस तरह की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, परंतु क्या ये मिड लाइन को क्रॉस हुआ है? मिड लाइन पर पैर जरूर पड़ा है, परंतु शायद मिड लाइन को क्या क्रॉस हुआ है, क्या थोड़ी देर वहां पर हवा में था, ये देखना होगा हमारे एम्पायर्स, हमारे रेफरीज का अंतिम निर्णय, क्योंकि ये मुकाबला तब कर देने वाली रेड होगी। जी हाँ, मुकाबला तब्दील कर देने वाली रेड होगी और साथ ही साथ यहाँ पर बोनस के साथ यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि सुपर रेड वहां पर मिली। और इसी की हम बात कर रहे थे आयुष की, अगर देखिए डिफेंडर का पैर भी बाहर निकल जाता तो भी रेडर्स को पॉइंट मिला निश्चित था, वो रेडर वहां से आउट माने जाते नहीं। और अब देखना होगा, सचिन जगबीर गए हैं, 5 पॉइंट की देखते ही देखते लीड हो गई है यहाँ पर हम्पी हीरोज के पास। और इसे देखना होगा अब टडोबा टाइगर्स किस तरह से क्या ऑल आउट, अब जो सपना है ऑल आउट करने का हम्पी हीरोज को यहाँ पर, उसे क्या भूल देना होगा। अच्छा प्रदर्शन इस बार सचिन जगबीर, ये अच्छी एस्केपिंग स्किल्स है,
2 पॉइंट्स निश्चित तौर पर लेकर आएंगे। सोनू लथवाल को शिकार बनाया है और एक और खिलाड़ी को यहां पर शिकार बनाएंगे आयुष। हर्षित, पिछले 4 रेड से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टडोबा टाइगर्स के जो रेडर्स आते हैं वो कुछ पॉइंट लेके जाते हैं और मैच पे रह जाता है हम्पी हीरोज के लिए महज एक खिलाड़ी। लेकिन वो एक खिलाड़ी ऐसा कारनामा करके दिखाता है, यही वो खिलाड़ी है जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। रोहित राघव ऐसे पॉइंट्स निकाल के ले जाते हैं, ऐसे सुपर रेड्स निकाल देते हैं जिसके चलते अपने साथी खिलाड़ियों को रिवाइव कर देते हैं। क्या ऐसा कुछ इस बार फिर भी कर पाएंगे? रनिंग टच करने का प्रयास जरूर था, वॉक लाइन के एकदम पास, और बोनस लाइन है उसको भी क्रॉस करते हुए कॉर्नर के खिलाड़ी के पास से मूव कर गए कवर्स के खिलाड़ियों की तरफ। जो समय है वो 10 सेकंड का बता, एंकल होल्ड कर दी और यहाँ डबल एंकल होल्ड, डबल थाई होल्ड करने का जो प्रयास था, थाई और एंकल्स के बीच में से वहां पे पांव के ऊपर पूरी ग्रिप बना ली और इसी के चलते एक बोनस पॉइंट तो नहीं रोक पाएंगे लेकिन रोक पाएंगे यहाँ पर डिफेंडर को। और सही एग्जीक्यूशन था वहां पर। हर्ष वहां पर गए थे और जानते थे वहां से कि बॉक लाइन से वहां पर थोड़ा सा पीछे, यानी कि अच्छी तरह से इस वहां पर टैकल को अटेम्प्ट कर सकते थे और एक अच्छा टारगेट वहां पर अटेम्प्ट किया। और चलिए आखिरकार यहां पर सिर्फ 1 पॉइंट की लीड अब अपने हीरोज के पक्ष में देखेंगे क्योंकि बोनस वहां पर निश्चित तौर पर मिला है। अब विशाल चहल अक्सर माहिर है वहां पर साथ के डिफेंसिव पॉइंट्स लाने में, बहुत अच्छा टच पॉइंट लेकर आते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले लगातार कुछ मुकाबलों से। 7 सुपर 10 भी बना चुके हैं और देखना होगा नितिन देसवाल को यहाँ पर शिकार बनाने का प्रयास था। और देखिए आयुष, पिछली बार नितिन धनकर को रिवाइवल मिला नहीं था, यानी कि हमने देखा है पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध जो भी टीम खेलती है वो यही प्रयास करती है कि आशीष नरवाल को रिवाइवल ना मिले और लगातार उन्हें पकड़ा जाए। काजीरंगा राइनोज के विरुद्ध टीम चाहती है प्रतीक दहिया को पॉइंट न मिले और हम्पी हीरोज के विरुद्ध टीम चाहती है नितिन धनकर को पॉइंट न मिले, परंतु इस बार नंबर 4 जर्सी को यहां पर शिकार बनाएंगे रिंकू को लेफ्ट कॉर्नर। जैसे मुकाबला हाफ टाइम की तरफ जाता है हर्षित, या फिर मुकाबला जो है फुल टाइम की एंडिंग की तरफ जाता है, अंतिम के कुछ मिनट होते हैं, वहां गलती करती हमेशा नजर आती है टडोबा टाइगर्स की टीम। और आज भी कुछ वही दृश्य दिखने को मिले, वही कहानी रही है उनके लिए। एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास जरूर कर रहे थे, कॉर्नर के खिलाड़ी ने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, उसके ऊपर ग्रिप अच्छी बनी नहीं, डिफेंस में समझदारी दिखा, क्या और कोई खिलाड़ी उसके बीच में आया नहीं, इसी के चलते महज 1 ही पॉइंट मिलेगा हम्पी हीरोज को। 17-15 2 अंकों का ये फायदा, ये जो डिफरेंस है वो कैसे यहाँ भुना पाएंगे। हम्पी हीरोज थोड़ा सा एडवांस जरूर खेल रही है। अनुज कुमार को देखिए बॉक लाइन के, उनको ज्यादा अंदर आने नहीं दिया, यहाँ अंदर आए और बाहर भी चले गए पॉइंट लेके। क्या वहां 2 पॉइंट मिलेंगे या मिलेगा महज 1 पॉइंट? ये है ऑफिशियल कंफर्मेशन हर्षित। देखिए बिट्टू को क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, वहां अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाए उनके साथी खिलाड़ी और मोहित नरवाल, और उसी के चलते 1 अंक गंवा बैठी है वहां हम्पी हीरोज की साइड। फायदा होगा टडोबा टाइगर्स को। और बिल्कुल सही कहा आपने, फायदा यहाँ पर निश्चित तौर पर होगा। और इस बार देखना होगा क्या यहाँ पर एंकल होल्ड का फिर से प्रयास, वीक एंकल होल्ड की लगातार यहाँ पर कोशिश हो रही है, लगातार वीक एंकल होल्ड की कोशिश। फ्रेम में ही नहीं है, देखिए बिल्कुल वहां पर फ्रेम में नहीं जब आप एंकल होल्ड के लिए जा रहे हैं। पिछली बार हमने रिंकू को देखा और इस बार अंकित को देखा कि वो फ्रेम में नहीं है। रिंकू ने यहाँ पर क्या गलती की थी पिछली बार, वो बिल्कुल एंकल के पिछले वाले हिस्से को पकड़ने चले गए थे, और इस बार अंकित से यहाँ पर क्या गलतियां होते हुए नजर आई कि उन्होंने बिल्कुल आगे वाले हिस्से को पकड़ने चले गए। वो परफेक्ट फ्रेम में अगर एंकल नहीं आता है रेडर का तो किसी भी डिफेंडर को एंकल होल्ड के लिए नहीं जाना चाहिए, और बिट्टू को भी इतना एडवांस जाने की आवश्यकता नहीं थी, फ्रंट ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं थी। और आयुष, बताना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर आप सही दृश्य देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा जाना पहचाना ख्यात नाम अब आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे। हमारे गेस्ट की अगर हम बात करें जो हमारे साथ आज मौजूद हैं युवा कबड्डी सीरीज में, उनके बारे में कौन नहीं जानता है। जो कबड्डी को जानता है, जो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पहचानता है, वो अच्छी तरह से बहुत ही आदर के साथ नाम लेता है इनका। जी हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान केसी सुथार सर, उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। इंटरनेशनल कबड्डी कोच, फॉर्मर ईरान कोच एट एशियन गेम्स, जी हाँ, और साथ ही साथ साई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 9 साल का यहाँ पर जिस अंदाज में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है, 35 साल से ज्यादा कोचिंग एक्सपीरियंस उनके पास है साई में। इससे बड़ा नाम कबड्डी के मैट पर खेलों के महासंग्राम में हो नहीं सकता। श्रीमान केसी सुतार सर, आपका तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करना चाहेंगे। और जितनी रिस्पेक्ट है आयुष इनके लिए कबड्डी के खिलाड़ियों में, जिस तरह से सम्मान है, वो सच में काबिल तारीफ है और प्रशंसनीय है आयुष।
हर्षित, एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि दो ही टीम है, एक ईरान और एक भारत की टीम, जिन्होंने 3 कबड्डी के अभी तक जो वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें आमना सामना किया है। तो उनमें एक टीम के तो ये जो है वो मूल निवासी है, एक देश से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया है, और वहीं दूसरी टीम जो ओपोनेंट टीम है उनको ये कोचिंग देते हैं। तो ये नाम जो है वो और बड़ा हो जाता है। यहाँ नितिन धनकर के ऊपर नजर बनाए रखिएगा। बोनस क्लेम करने का प्रयास, फ्रंट ब्लॉक क्या यहाँ डैश कर दिया गया, बिल्कुल यहाँ तो डिफेंडर्स थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पकड़े गए हैं अपनी इस रेड में और गवा बैठेंगे। 1 पॉइंट टडोबा टाइगर्स को होगा इस पॉइंट का इजाफा। कॉर्नर के खिलाड़ी के पास में से इनके खिलाड़ी की तरफ रुक करने की कोशिश की, जर्सी नंबर 21 ने फ्रंट ड्रॉप किया, पीछे से आके एंकल होल्ड करने का प्रयास, और इसी के चलते एक और पॉइंट मिलेगा टडोबा टाइगर्स को। हर्षित, जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पर बहुत ही अच्छा टैकल था, बहुत अच्छे अंदाज से। ये देखिए इस तरह कॉम्बिनेशन बनाना होगा, क्योंकि देखिए नए कवर है, नए कॉर्नर है, तो कवर कॉर्नर कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनता है ना आयुष, तब तक वो टीम का डिफेंस सुदृढ़ नजर नहीं आता है। तो वो सुदृढ़ टीम के डिफेंस के लिए कवर और कॉर्नर का कॉम्बिनेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार वो कवर कॉम्बिनेशन अच्छा देखने को मिला कि जब कवर के खिलाड़ी जाएं तो कॉर्नर का समर्थन होना चाहिए, जब कॉर्नर के खिलाड़ी जाएं तो कवर का समर्थन होना चाहिए। इस बार वो समर्थन हमें देखने को मिला, तो आपने डिफेंस में टैकल पॉइंट प्राप्त किया। सोनू लटवाल, स्ट्रेच करने की इनमें जो काबिलियत है, जो पोटेंसी है इनमें, अपने खेल को लेकर वो अच्छा नजर आता है, वो जो ताकत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी दर्शाते हैं। और इस बार बैक किक लगाकर लेफ्ट रेडर के तौर पर यहाँ पर अंकित को शिकार बनाएंगे राइट कॉर्नर से। और थोड़ी सी मुस्कुराहट यहाँ पर काबू केसी सुतार सर के चेहरे पर भी नजर आई आयुष, जिस तरह से बैक किक का यहाँ पर मुजाहिरा देखने को मिला। और कितनी अच्छी हाइट के ऊपर उसे एग्जीक्यूट किया था हर्षित, उससे है ना जो 4 चांद लग जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फिलहाल इस समय हाफ टाइम हो चुका है, टडोबा टाइगर्स 19 पे है, हम्पी हीरोज 21 पे, 2 अंकों का ये फासला है। और हर्षित, अब आपको हाइलाइट्स के अंदर बताया जाएगा कि क्या कुछ घटा अभी तक इस फर्स्ट हाफ में। जी हाँ, तो चलिए हाईलाइट की तरफ यहाँ पर हम जल्दी की तरफ मुंह मोड़ते हुए आपको नजर आएंगे कि चलिए रुख मोड़े और जिस तरह की हाईलाइट रही है इस मुकाबले की, उसका थोड़ा सा अनावरण कर देते हैं हमारे सभी दर्शकों को। जिस तरह से मुकाबले की शुरुआत हुई आयुष, जोश, जज्बा और जुनून, एक बार फिर से मोहित जयपाल वहाँ पर मौजूद नहीं थे, अपनी टीम के लिए अनुज कुमार प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम का। सचिन जगबीर जरूर टीम में है, परंतु कप्तानी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हुए मौका मिला है अनुज कुमार का। देखिए मुस्कुराहट के साथ इनके लिए शुरू हुआ और अभी तक अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। बहुत ज्यादा लंबी लीड लेने का मौका हम्पी हीरोज को दिया नहीं, हम्पी हीरोज को एक बार ऑल आउट भी किया है। डिफेंस में कवर कॉर्नर का कॉम्बिनेशन शुरू में इतना अच्छा नजर नहीं आया, सचिन जगबीर जरूर शिकार बने, नितिन धनकर को कुछ पॉइंट मिलने दिए शुरू में, परंतु उसके बाद से डिफेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और हाईलाइट में कुछ ऐसे मूव्स आपको नजर आएंगे विशाल चहल के, जहां पर अच्छे रेड पॉइंट्स लेते हुए नजर आए आयुष। डिफेंस की तो बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी हम्पी हीरोज की, जो कि जब मैच के ऊपर 2 या 3 खिलाड़ी मौजूद है तब भी उन्होंने इतने आसानी से पॉइंट्स नहीं दिए थे। पूरे के पूरे जोश, जज्बा और जुनून जो हमारी टैगलाइन है उसी के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आए। और यदि उनके डिफेंस पे कहीं चूक हुई तो वहाँ शूट करने में बहुत ज़्यादा समय लगाया नहीं है ओपोनेंट ने भी। अगर आप शूट करेंगे ना तो विरोधी तो उसका फायदा उठाएगा, ये जिंदगी का भी उसूल है और उसूल तो है कबड्डी के खेल का भी। हाफ टाइम तक पॉइंट की बात करें तो रेड पॉइंट करते हुए टडोबा टाइगर्स ने 12 पॉइंट क्लेम किए हैं, वहीं 18 पॉइंट मिले हम्पी हीरोज को। 4 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं टाइगर्स ने, तो वहीं 3 पॉइंट अपने साथ लेकर आया हीरोज की साइड। 2 ऑल आउट के पॉइंट मिले टडोबा टाइगर्स को, क्योंकि एक बार ऑल आउट कर दिया गया था हम्पी हीरोज को। एक्स्ट्रा का 1 पॉइंट टडोबा टाइगर्स के खेमे में है और 0 वहां नजर आ रहा है आपको हम्पी हीरोज की तरफ से हर्षित। जी हाँ, तो ये है लिखा चुका अभी तक फर्स्ट हाफ का। 4 टैकल पॉइंट्स में जरूर यहाँ पर आगे है टडोबा टाइगर्स, रेड में जरूर 6 पॉइंट पीछे। ये एक सबक बनेगा आने वाले समय पर। चलिए सबक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं छोटा सा, जल्दी सेकंड हाफ के दौरान हमारे दर्शकों के साथ फिर से साझा करेंगे सेकंड हाफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिल रहे हैं आप सभी के साथ वापस। चलिए वापसी कर लेते हैं सेकंड हाफ में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों के साथ, और चलिए ले चलते हैं आपको सीधा सेकंड हाफ की तरफ। स्कोर बता देते हैं फर्स्ट हाफ का 21-19 से टडोबा टाइगर्स पीछे है। हम्पी हीरोज इस मुकाबले में थोड़ा सा आगे 2 पॉइंट्स के साथ, परंतु कबड्डी में जिस तरह से आयुष कहते हैं और सभी कहते हैं कि 2 पॉइंट्स की लीड कभी भी कबड्डी के खेल में जब पूरा सेकंड हाफ बचा हो तब मायने रखती नहीं है।
और अनुज कुमार जिन्होंने 7 रेड पॉइंट्स अभी तक इस मुकाबले में लिए हैं। लेफ्ट रेड के साथ शुरुआत करेंगे, टच पॉइंट लाने का प्रयास। बिट्टू आज उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए, राइट कॉर्नर से उन्हें अभी तक पॉइंट मिलते हुए नजर नहीं आए। आयुष, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद अर्षित, बिट्टू का आपने नाम लिया और आपने कहा कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए, ये झलकियां आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार साफ देखने को मिलती है। वहां पर लूज एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, मोमेंटम के अंदर थे वहां रेडर को ऐसे के अंदर रोकना थोड़ा मुश्किल होता है और इसी के चलते 1 पॉइंट का खामियाजा होगा हम्पी हीरोज की तरफ से। अब ये रेड करने के लिए आए जर्सी नंबर 13 में सोनू लठवाल। 5 रेड पॉइंट अभी तक ये क्लेम कर चुके हैं। डिफेंस की बात करें तो 7 का है, बोनस अभी भी इनके लिए एक्टिवेट है। थोड़ा सा कवर के खिलाड़ियों को निशाने बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नचा कर रहे हैं वहाँ डिफेंस को। और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है अर्षित कि जब आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, तब आप अपने विरोधी को कंफ्यूज करिए। करने क्या आए थे, एम्प्टी रेड डालने, समय व्यर्थ करने के लिए। अपनी जो 1 अंक की जो ट्रायल है उसको थोड़ा सा बचाना चाह रहे हैं कि वो जो लीड अपनी टीम ने गेन कर रखी है ना, उसको बरकरार रखें अंश। जी, और देखिए हमेशा बड़े खिलाड़ियां कहा करते हैं कि कभी कभी आपके लिए, परंतु चलिए ये बड़े खिलाड़ी के तौर पर उत्पन्न हो सकता है खिलाड़ी। क्या उत्तेजना नजर आती है, क्या डुबकी नजर आई है यहाँ पर। देखिए जिस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे ही देखा कि चलिए नितिन देसवाल वहां से आ रहे हैं, ये होता है नजरों का खेल। नजरें आपको हर एक खेल बल बनाकर रखनी होती है और शानदार यहाँ पर डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर मिड लाइन को क्रॉस किया। ये है वो डुबकी जिसकी हम बात करते हैं लगातार आयुष, ये है वो उत्तेजना, ये है वो प्रशंसाजनक प्रदर्शन। और इस बार जंप नजर आएगी, सोनू लठवाल हम्पी हीरोज के लिए जंप लगाने का प्रयास, परंतु क्या लाजवाब कॉर्नर से यहाँ पर दरा दबोचा गया है। शानदार पिन डाउन किया जाएगा, बड़ा टैकल यहाँ पर। इस बार तारीफ करनी होगी यहाँ पर विशाल चहल की, ये एक प्योर ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नजर आ सकते हैं अपनी टीम के लिए आयुष। और भाई अंकित दुल, इनको भी आप नहीं भूल सकते, इनका बहुत अहम भूमिका रही थी। पाँव को हवा में उठा देना जिससे कि मोमेंटम जो है वो रुक जाए रेडर का, ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। सुपर टैकल की सिचुएशन या ऑन है, तड़ोबा टाइगर्स के लिए रेड करने के लिए आए उनके आज के बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, नए कप्तान अनुज कुमार, डैश कर दिए जाएंगे। ये होती है स्ट्रैटेजी, कॉम्बिनेशन, टीम का एक्सीलेंट एफर्ट। सुपर टैकल के चलते मिलेंगे 2 पॉइंट हम्पी हीरोज को। सामने से जाके ब्लॉक करने का प्रयास था संदीप का और एक पावरफुल अटेम्प्ट के साथ सफलता भी मिली अर्षित। और देखिए आज उनका ये तीसरा टैकल है आयुष, जिस तरह से वो टैकल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात इस टैकल में क्या थी, सबसे खासियत बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर डैश करने गए थे, उन्होंने सबसे पहले रेडर का मोमेंटम को तोड़ा और जो यहाँ पर कारनामा करने में थोड़ा सा नासमर्थ रहा है टडोबा टाइगर्स का डिफेंस। देखिए ये एडवांस था, जब मिड लाइन की तरफ अगर रेडर अपना पैर जमा चुका है तो इस तरह से अमन गोलियां आप उन्हें जाकर डैश इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं। और हमारे वो कमेंटेटर अक्सर नवीन भी कहा करते हैं कि जितना ज़्यादा डैश आप लोअर बॉडी पर जाकर करेंगे, इतना ज़्यादा अगर आप अपर बॉडी से करने जाएंगे तो उतनी मुश्किलात होती हैं, उतनी आसानी के साथ रेडर को मौका रहता है। इस बार और सचिन जगबीर ने कोशिश जरूर की है जंप लगाने की, परंतु एक शानदार टैकल, एक बार फिर से शानदार टैकल नजर आएगा। इसमें सचिन जगबीर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। रोहित राघव सरप्राइज किया, परंतु ग्रिप देखिए, जब रोहित राघव वहां पर टैकल के लिए जाते हैं, उन्होंने बंगाल फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बड़ी लीग्स में, और अब यहाँ पर जिस तरह से वो सरप्राइज करते हैं और जो उनकी ग्रिप है आयुष, वो सच में अच्छी नजर आती है। सबसे अच्छी चीज ये थी डबल एंकल होल्ड के लिए गए, और अगर आप एक पाँव की बजाय दोनों पाँव के ऊपर होल्ड बनाना चाहते हैं, ग्रिप देते हैं, तो मोमेंटम तो कहां से लाएगा रेडर, और जब वो रेडर मोमेंटम नहीं ला पाता तो अंक गंवा देता है। नितिन धनखड़ या रेड करने के लिए 4 का डिफेंस है, बोनस एक्टिवेट नहीं है, रनिंग अटैच करने का प्रयास, लेकिन कॉम्बिनेशन टैकल के चलते जाना होगा बाहर। पीछे से कॉर्नर के खिलाड़ी ने चेन तोड़ के एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, और उस एंकल होल्ड के जवाब में सामने से आके जो ब्लॉक का एफर्ट था जर्सी नंबर 13 में अंकित दुन, उससे मिली है सफलता। एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टडोबा टाइगर्स के लिए, मुकाबले में बने रहने के लिए ये इंश्योर करे टडोबा टाइगर्स कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं हो। 15 मिनट 40 सेकंड का खेल अभी यहाँ इस मुकाबले में खेला जाना बाकी है। ये जो फासला है महज 3 अंक का है। विशाल चहल रेड करने के लिए आए 5 के डिफेंस के अंदर, यहाँ से पॉइंट निकालना सबसे ज्यादा टफ होता है अर्षित। 5 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी जब भी मैच पे होते हैं वहां पॉइंट निकालना चाहते हैं तो इतनी आसानी से आपको पॉइंट मिलता नहीं है, और हश्र क्या होता है, ये एम्प्टी रेड। जी, और जरूर यहाँ पर एक छोटी सी वार्निंग दी गई है हम्पी हीरोज के खिलाड़ियों को, कप्तान को, कि चलिए सिर्फ कप्तान आप बोलिए, बाकी खिलाड़ियों को थोड़ा सा यहाँ पर अपने काबू में रखिए, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और देखिए मुझे बड़ा एक महत्वपूर्ण क्रम याद आ रहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट याद आ रहा है रणधीर शेरावत जी का। उन्होंने कहते हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी को
एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए 3 बातों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर ध्यान रखना होता है। वो होता है सबसे पहला अपना खेल का अभ्यास जिस तरह से वो करते हैं, दूसरा दूरदृष्टि और तीसरा अनुशासन। तो अनुशासन एक बहुत बड़ी कड़ी है सभी खिलाड़ियों के लिए कि आप अनुशासन के तहत अनुशासन को बनाए रखें कबड्डी के मैट पर, और उसी अनुशासन की हम बात करते हैं। और टडोबा टाइगर्स यहाँ पर 3 पॉइंट से पीछे जरूर है। अनुज कुमार अब फिर से एक बार रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। जिस तरह से आपने कहा था कि 5 के डिफेंस में पॉइंट लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिल्कुल वही नजर भी आएगा आपको एक बार फिर से। अनुज कुमार थोड़ी सी ज्यादा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए नजर आएंगे आपके स्क्रीन पर। टडोबा टाइगर्स के लिए सबसे ज्यादा रेड भी इसी खिलाड़ी ने मारी है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं। 8 रेड पॉइंट अपने टीम के लिए क्लेम करे या परस्यूट करा। और जैसा हर्षित मैंने आपको पिछले मुकाबले में भी बताया था, परस्यूट तभी सक्सेसफुल है कि जैसे ही वो खिलाड़ी आपको पीठ दिखा के जा रहा है, बॉक्स लाइन क्रॉस करते ही आप उसको टच कर लीजिए और वापस आ जाइए। और वही कारनामा करके दिखाया है या हम्पी हीरोज के लिए रोहित राघव ने। यहाँ थोड़ी सी जो है वो चूक हुई है, पीठ दिखा के देखिए अर्षित, जैसे ही बॉक्स लाइन को क्रॉस किया, टच किया और अपनी टीम के लिए पॉइंट एंश्योर किया। यही है नियम परस्यूट का। बहुत गलत कार्य यहाँ पर। मनोज कुमार, आप कभी भी कबड्डी के मैट पर इतना ज्यादा वो अपने ऊपर से उन्होंने जिस तरह से ध्यान हटाया, और कबड्डी के मैच से अगर आप वहाँ पर ध्यान हटा लेते हैं, कबड्डी के गेम से अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान हटा लेते हैं, तो कबड्डी का खेल आपको तुरंत वहाँ पर उसका रिजल्ट देता है। और इस बार विशाल चहल ने जरूर ध्यान लगाया रखा कि कौन कैसे कहाँ से खिलाड़ी आने वाला है। चाहते रोहित राघव लगातार प्रयास करेंगे, रोहित राघव लगातार प्रयास करेंगे, तो वो जंप के लिए तैयार थे, सही समय पर जंप लगाई और उस जंप के साथ यहाँ पर डू और डाई रेड में अपनी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए। अब एक बार फिर से 5 का डिफेंस है। सोनू लथवाल यहाँ पर आज अपनी टीम के लिए अच्छे रेडर के तौर पर उभरे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आज अपनी टीम के लिए यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पे हीरोज के लिए सोनू लथवाल 8 वहाँ पर रेड पॉइंट्स लेकर आए। रोहित राघव, सोनू लथवाल को मिले 5 रेड पॉइंट्स और रोहित राघव को 2 टैकल पॉइंट्स दिए और संदीप ने कुल मिलाकर 4 टैकल पॉइंट्स दिए हैं आज। कॉम्बिनेशन रहा है आज, ऑलराउंडर के तौर पे खेलती आई है हम्पी हीरोज की साइड। जो खिलाड़ी रेड लेके पॉइंट लेके आ रहा है, वही खिलाड़ी डिफेंस के अंदर परफॉर्म कर रहा है, तो इससे अच्छा आपको क्या होगा, जो डिफेंडर्स है उनके ऊपर से भी थोड़ा सा दारोमदार कम हो जाता है, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और कम हो जाती है। हालांकि आप लीड प्लेयर हैं, आपका मेन जो काम है वो है डिफेंड करना, तो उसके चलते तो आपको कार्य तो करना होगा। लेकिन विशाल चहल एमपी रेड से संतुष्ट रहेंगे, अभी अफोर्ड भी कर सकते हैं। पिछली रेड के अंदर जब पॉइंट लेने के प्रयास थे हम्पी हीरोज के, उसके अंदर सफलता मिली नहीं। क्या यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करके पॉइंट निकाल पाएंगे? हम्पी हीरोज की तरफ से सोनू नटवल अगली रेड पे गए हैं। डिफेंस के अंदर 5 खिलाड़ी है, 5 पॉइंट अभी तक ये टैकल कर चुके हैं। क्या ये किक जो है वो कनेक्ट की है? सेंट्रल लाइन की तरफ एक बार वापस आ चुके। कॉर्नर के खिलाड़ी थोड़ा सा डीप जैसे ही चले गए थे और वहां से पॉइंट निकालना आसान हो गया, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो फुल स्ट्रेच थी। स्ट्रेच बॉडी के ऊपर जब आप किक मारते हैं और अगर संपर्क साध लेते हैं तो खिलाड़ी कुछ कर नहीं सकता। थाइस की तरफ पांव को निशाना बनाया और उसी के चलते एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित कर लिया। रेड तो टडोबा टाइगर्स के लिए भी ये स्ट्रॉन्ग होनी है। अर्षित, आयुष, इससे पता लगता है पिछली रेड में यहाँ पर कि सोनू लथवाल इतना ज्यादा डीप गए, उसमें अंकित कुछ भी कार्य नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ अपने आप को बचा सकते थे। उन्होंने वो कार्य बखूबी करने का प्रयास किया, परंतु मैं लेफ्ट फ्लैंक से जरूर वहाँ पर थोड़ा सा नाखुश था कि उन्होंने एटलीस्ट वहाँ पर थोड़ा सा सोनू लथवाल को डराया भी नहीं। और अगर आप उस तरह से यहाँ पर लेफ्ट फ्लैंक से इतनी ज्यादा आजादी दे देंगे तो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर ये कार्य हो सकता है। तो इससे जरूर यहाँ पर बचना होगा, इससे जरूर यहाँ पर आप ऑलमोस्ट थोड़ा सा रेडर को डराना चाहेंगे कि वहां से अगर कॉर्नर के खिलाड़ी जरूर हम देखना चाहते थे नंबर 4 जर्सी रिंकू से कि थोड़ा सा आए, सोनू लथवाल को वहां पर जरूर थोड़ा सा एटलीस्ट डराने का प्रयास करें। और अब आप यही कार्य 21 नंबर जर्सी अमन से देखना चाहेंगे, जो देखने को मिल भी रहा है अभी तक। हर्षित, मुझे थोड़ा सा मेरा एक थॉट ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा अलग है, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये होता है कॉम्बिनेशन टैकल। एक तरफ कॉर्नर के खिलाड़ी ने वहां पर थाई होल्ड करने की कोशिश की, तो दूसरे कॉर्नर से रिंकू ने अपना होल्ड छोड़ा और देखिए किस तरह से वहां पूरे फोर्स के साथ घुमा सा दिया रेडर को। इसी के चलते एंश्योर कर दिया अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट। इसलिए जो पॉइंट की बात कर रहे थे आर्थिक, हम इस पे चर्चा करने का समय काफी ट्राई क्योंकि इस समय तो एक बार फिर हो चुका है डू और डाई रेड का। और इस सिचुएशन के अंदर या तो मरिए रनिंग एंड टच करने का प्रयास जरूर करा और शिकार भी बना लिया है अपने ओपोनेंट खिलाड़ी मोहित नरवाल को। 1 अंक विशाल चहर एक बार फिर क्लेम करते हुए अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ डीप जाने का प्रयास कर रहे थे, इनके खिलाड़ी को चकाते हुए 1 अंक इंश्योर कर दिया हर्षित। जी हाँ, बहुत ही शानदार वहाँ पर टच पॉइंट मिलेगा मोहित नरवाल को और ये बहुत ही अच्छा होता है। डू और डाई रेड में जब आप विद इन 10 सेकेंड से जाकर वहाँ पर ये प्रयास करते हैं पॉइंट लाने का, तब आप बहुत ही सक्सेसफुल बन जाते हैं।
और मैं देखिए सोनू लथवाल इस बार क्या ये डैश कर दिया जाएगा, क्या ये डैश किया गया है या फिर एक पॉइंट जरूर बोनस मिला है सोनू लथवाल को, बोनस जरूर मिला है। परंतु मैं इसकी बात कर रहा था कि जब तक आप अटैक करने नहीं जाएंगे, जब तक आप उस खिलाड़ी को टच पॉइंट दे सकते हैं। इस बार शानदार डैश सोनू लथवाल द हल्क जैसे रेडर को यहाँ पर सोलो डैश करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। परंतु चलिए हर्ष का माहौल यहाँ पर टीम ने बनाया है क्योंकि हर्ष ने शानदार डैश यहाँ पर कर दिखाया है। हर्षित, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक अभी मैं कबड्डी को समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका जो मोमेंटम है वो रेडर के मोमेंटम से ज्यादा हो तो आप उन्हें डैश कर सकते हैं। इसी के चलते एक पॉइंट मिला था और यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन में भी कप्तान अनुज कुमार अपनी टीम के लिए एक पॉइंट लेकर आए। लेफ्ट और राइट कॉर्नर को आप चकाना चाहते थे, उनको थोड़ा सा डाउट में डालना चाहते थे। सोलो टैकल थोड़ी सी टफ होती है और उसी के चलते एक और पॉइंट टडोबा टाइगर्स को 28-29। हर्षित, क्या लाजवाब ये मुकाबला रहा है। लगभग 9 मिनट का खेल इस मुकाबले में अभी भी खेला जाना बाकी है और स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 पॉइंट का डिफरेंस था, वो भी यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा 29-29 के साथ। देखना होगा यहाँ पर कि क्या किस खिलाड़ी को कैसे पॉइंट मिलेगा। क्या नितिन देसवाल ने जब गिरे थे तब क्या शायद उनका फुट थोड़ा सा मिडलाइन की तरफ गया था, क्या बोनस मिला है। नितिन देसवाल तो शायद बिल्कुल वहां पर जरूर आउट है। हर्ष का एक बार फिर से शानदार ये देखना होगा जी, नहीं बहुत दूर था वहां से मिडलाइन से, और क्या बोनस मिला है इसकी यहाँ पर बात कर रहे थे रेफरी की, क्या बोनस मिला है नितिन देसवाल को। अब देखिए आयुष, ये मुकाबला कितने कड़े समय पर पहुंच चुका है। बोनस जरूर दिया गया है। हम्पी हीरोज नितिन देसवाल चलिए जाते जाते आपने अच्छा ये कार्य किया है कि यहाँ पर आपने बोनस जरूर दिया है अपनी टीम को। और चलिए सरेंडर रेड है यानी कि टडोबा टाइगर्स इस मुकाबले में पहली मर्तबा आपको नजर आएगा बहुत समय के बाद यहाँ पर लीड में। आयुष, ये देखिए ये है कारनामा, ये है एक नई पॉजिटिव एनर्जी। और जिस तरह से मैं हमेशा कहा करता हूँ कि गोल्स हेल्प यू टू चैनल योर एनर्जीज इनटू एक्शन, आज वो गोल यहाँ पर नजर आया है। टडोबा टाइगर्स को अपनी एनर्जी को एक्शन में तब्दील करने में मदद मिली है। और वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो पिछले 2 मुकाबले हारे थे उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का है कि यहाँ आसानी से हार को स्वीकार करने वाली है नहीं टडोबा टाइगर्स की टीम। अभी तक 2 पॉइंटों का फासला है, 2 पॉइंट से लीड है और 2 बार ऑल आउट किया है किस टीम को, हम्पी हीरोज को, जो अपने पिछले दोनों के दोनों मुकाबले जीत के यहाँ पर पहुंची है। तो इस राउंड के अंदर बहुत टफ सिचुएशन, ये सच में चैलेंजर राउंड है। यहाँ चैलेंज कर रहे हैं अपनी खुद की स्किल्स को हर खिलाड़ी, चाहे वो डिफेंडर हो, चाहे वो रेडर हो, चाहे वो ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हो अपनी टीम के लिए। यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को बताने की कोशिश, एक बार फिर अनुज कुमार डीप जाने का प्रयास, बोनस उठाने की कोशिश जरूर की क्योंकि बोनस एक्टिवेट है। 15 सेकंड का समय और बचा अपने कैंच में, लेकिन उसको पूरा यूज करेंगे नहीं। एम्प्टी रेड के साथ ही संतुष्ट रहेंगे हर्षित। जी हाँ, और अब ये गेम हम्पी हीरोज से आपको एक्सेलरेट करने की उम्मीद रहेगी कि हम्पी हीरोज नितिन धनकर अक्सर एक्सेलरेट बहुत अच्छा करते हैं गेम को। ये होता है बैक गोल, ये होता है कवा कॉर्नर कॉम्बिनेशन। मैं इस कवा कॉर्नर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था आयुष की। ये देखिए जैसे उन्होंने देखा कि लेफ्ट कॉर्नर आ रहे हैं, जानते थे अमन गुलिया की मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, जानते थे अमन गुलिया की हर्ष वहां पर रिंकू आसानी के साथ बैक होल्ड करने आ रहे हैं, तो देखा सिंगल थाई होल्ड किया और नितिन धनकर को यहाँ पर चारों का निश्चित किया। ये होता है कवा कॉर्नर कॉम्बिनेशन और ये देखकर अच्छा लगा। और इसी में पॉजिटिविटी की बात कर रहा था आयुष शुरुआत में कि मोहित जयपाल, विनय राजेश नहीं जरूर जो सबसे ज्यादा पॉइंट टैकल में लेकर आए टडोबा टाइगर्स के, परंतु जो नए तो कॉर्नर और 2 नए कवर हैं उनमें वो जरूर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं कि बहुत ज्यादा टैकल्स उन्होंने किए, परंतु उतना ज्यादा डिमोरलाइज भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे अनसक्सेसफुल टैकल्स भी दोनों ने मिलकर किए थे। इसलिए वहां पर एक नई एनर्जी के साथ जा रहे हैं। टच पॉइंट जरूर इस बार सोनू लथवाल को मिलेगा, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ स्किल है, ये इनकी प्रशंसाजनक स्किल है सोनू लथवाल की। आयुष, क्या कहेंगे इस स्किल के बारे में आप? जहां इनको समय मिलता है, जहां इनको मौका मिलता है, इनकी निगाहें चारों तरफ दौड़ती है और चाहे वो खिलाड़ी कवर पे हो, चाहे वो इनकी पोजीशन पे हो, चाहे वो खड़े हो दोनों ही कॉर्नर्स पे, जो कि दोनों ही ऑपोजिट एंड पे होते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी पॉइंट लेके आता है। पॉइंट तो अब यहाँ लाना है, सुनिश्चित करना होगा क्योंकि डू और डाई की सिचुएशन है। बोनस से भी काम चल जाएगा। विशाल जो है क्लेम कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी को मैंने टच किया, कवर का वो खिलाड़ी, और बिल्कुल हाँ, जर्सी नंबर 6 के रूप में उनके ओपोनेंट टीम के जो खिलाड़ी नितिन देसवाल, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। लेफ्ट कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास कर रहे थे, उसके बाद में जाते जाते कवर के रूप में खड़े नितिन देसवाल को टच किया और अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट इंश्योर किया। लीड अब महज 3 पॉइंट की रह चुकी है। 1 अंक का इजाफा जो हुआ उससे इंक्रीजमेंट की कोशिश हमेशा करती है टीम। सोनू लथवाल दारोमदार इनके ऊपर रहेगा, जिम्मेदारी आ चुकी है। अब यहाँ से अपनी टीम को अगर
जीत के करीब लेके जाना है, लगातार जो विनिंग स्ट्रीक है उनको कंटिन्यू करना है, तो इस अहम रेडर को ट्रेड करते हुए पॉइंट लाने होंगे। यहाँ तो मुझे आ नहीं रहे कोई पॉइंट नजर हर्षित। जी हाँ बिल्कुल, इस बार जरूर पॉइंट नहीं। और चलिए हमारे दर्शकों को आयुष को बता देते हैं कि चैलेंजर राउंड, देखिए सबसे पहले हम हमारे पूरे राउंड की बात करते हैं। सर्वाइवल राउंड में आपको 11 टीम नजर आ रही थी और सर्वाइवल उसका यही इसलिए नाम रखा था कि देखना हो कौन सी 8 टीम सर्वाइवल कर जाएगी और बूस्टर राउंड में चली जाएगी, जहां पर आपको 8 टीम्स नजर आई। 8 में से अब चैलेंजर राउंड में आपको 6 टीम नजर आ रही है। और ये बताना चाहेंगे कि आयुष सभी दर्शकों को कि इस चैलेंजर राउंड में सिर्फ चुनौती रहेगी, सभी खिलाड़ियों के लिए चुनौती रहेगी, सभी टीम्स के लिए चुनौती रहेगी कि किस पोजीशन पर आप समाप्त करते हैं, क्योंकि वो पोजीशन जितना आप ऊपर रखेंगे उतना ज्यादा आसान आपको बनेगा फाइनल की राह। अगर आप 5वें छठे पायदान पर रहेंगे तो उतने ही ज्यादा मुकाबले आपको खेलने होंगे। और चैलेंजर राउंड में कोई एलिमिनेशन नहीं है, ये बता दें हमारे सभी दर्शकों को कि सभी 6 टीम्स जाएगी यहाँ पर सबमिट राउंड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाएगी वो ये है कि यदि आप 5th और 6th पोजीशन के ऊपर रहेंगे तो जो 4 मुकाबले आपको खेलने वो चारों के चारों में आपको जीत हासिल करनी होगी और फाइनल मुकाबले तक यदि आप पहुंचे तो 5वां मुकाबला जीतेंगे तो वो ट्रॉफी आपके नाम आएगी। बहरहाल वो कैलकुलेशन अभी थोड़ी सी दूर रखते हैं। अभी बात करते हैं अर्षित वापस इस मुकाबले की, जहां मुकाबला एकदम कड़ा चल रहा है। हम्पी हीरोज एम्प्टी रेड, क्या यहाँ एम्प्टी रेड दी गई है या फिर रेफरी ने कहा जनाब आप वापस जाइए, कुल डिस्कशन का समय हो चुका है। जी और बहुत ही कांटेदारी मुकाबला, एक छोटी सी लीड यहाँ पर हम्पी हीरोज के पास है, जिस तरह से हमने सेकंड हाफ में बात की। और रोहित राघव की बात करें तो 8 रेड पॉइंट से निश्चित तौर पर लेकर आए, टैकल पॉइंट्स भी यहाँ पर अपनी टीम के लेकर आए, बहुत अच्छे अंदाज से एक बड़ी वहाँ पर रेड लगाई थी। इस रेड की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने अपने फुट का इस्तेमाल किया, अपने पैर का बहुत सही अंदाज से इस्तेमाल किया। और टैकल्स में भी जिस तरह से टैकल पॉइंट्स उन्होंने महज 3 अटेम्प्ट किया और 2 टैकल पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आए, ये देखकर अच्छा लगा। जिस तरह सरप्राइज कर रहे हैं और ये था वो प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए उनका कोई इरादा नहीं था परसूट करने का, परंतु जैसे देखा कि अनुज कुमार थोड़ा सा भैया आप हमारे खेमे से अपने खेमे में जा रहे हैं तो इतना कैजुअल होकर इतनी आसानी के साथ चिंता मुक्त नहीं थे आप, तो चलिए चिंता दे दी जाती है, अब बेंच पर जाइए और फ्री बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। ये हरियाणा में कहा जाता है ना कि जो खिलाड़ी घनी चौड़ में रेवण लाग रहा है, तो चौड़ में आप रह नहीं सकते। कबड्डी का खेल है, सब कुछ बराबर है और यदि आपकी आंखें थोड़ी भी इधर उधर हुई तो ओपोनेंट टीम के जो खिलाड़ी है वो उसका फायदा उठाएंगे। यहाँ पे डिफेंस में 7 खिलाड़ी और इसे ब्लॉक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जाते जाते 1 पॉइंट गंवा बैठेंगे। थोड़े से नाखुश है अपने साथी डिफेंडर से कि नहीं आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। और मुझे तो हर्षित अच्छी सोच लगती है क्योंकि देखिए मोमेंटम जो है वो उनका पूरा का पूरा सेंटर हाफ की तरफ था, 2 खिलाड़ियों का यहाँ टच रहा, इसी के चलते 2 अंक दिए गए हैं यहाँ ऑफिशियल रेफरी के द्वारा। और अब जो लीड है वो महज 1 अंक की रह गई है हर्षित। और पिछली रेड में जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल सही आयुष, वहाँ पर बहुत ही देखिए बहुत दूर थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गए थे वहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर, जिसके चलते इतना आसान नहीं था रिंकू के लिए। सोच एक बार फिर से सही थी और कवर का खिलाड़ी देखिए उसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, वो ट्रेवल उन्होंने ज़्यादा कर लिया था और मिड लाइन की तरफ ज़्यादा वहाँ पर नितिन बनकर चले गए थे, तो यह अपने तोहफे में 2 पॉइंट दिए। आप हर बार अपनी चाहे कि यार हर बार आप उसी तरह से यहाँ पर आउट करें विपक्षी टीम को, महत्वपूर्ण रेडर को, तो ये हर बार हो पाना वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। आपको हर बार अपने अंदाज में देखना होता है और सारी कैलकुलेशन करनी होती है। और इस बार कैलकुलेशन नितिन धनकर ने की है, बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेशन कर ली है। देखा था कि राइट फ्लैंक जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है, मेरे तक पहुँच नहीं पाएगा। देखिए गए राइट फ्लैंक को थोड़ा दूर तक धकेला, जानते थे अमन गुलिया बहुत ज़्यादा पीछे, कोई डैश नहीं आएगा, कोई डैश वहाँ पर नहीं आएगा राइट कॉर्नर से, तो आसानी के साथ लेफ्ट कॉर्नर को जाकर शिकार बनाया। ये होती है नितिन धनकर की प्रेजेंस ऑफ माइंड। और स्कोर में अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है आयुष, देखिए 3 मिनट का समय आसपास बचा है, 36-35 का स्कोर है, बिल्डअप हो रहा है अभी मुकाबला। और ये मुकाबला लो स्कोरिंग होने वाला है। लो स्कोरिंग मुकाबले और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। विशाल चहल रेड करने के लिए आए थे, डिफेंस में 7 के 7 खिलाड़ी, यहाँ परस्यूट देखने का नजर आ सकता है। थोड़ा सा गाइड तो जरूर कर रहे हैं अपने ओपोनेंट खिलाड़ियों को और उसी के साथ साथ अपने टीममेट्स को भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो ओपोनेंट है यदि वो परस्यूट करते हैं तो उसका क्या करना होता है। लेकिन चलिए परस्यूट यहाँ देखने को मिलेगा नहीं, देखने को मिलेगी एक साधारण सी रेड के अंदर जो खिलाड़ी रेड करने के लिए आए उनके ऊपर दरमदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नितिन धनकर इनका नाम है और ये धन की तरह पॉइंट कमा के लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए। 1 और पॉइंट का इजाफा कर लीजिए, इसी के साथ स्कोर जो है वो बराबर हो जाएगा। सामने से फ्रंट ब्लॉक करने का कोशिश था, जर्सी नंबर 13 के रूप में वहाँ अंकित धुल मौजूद थे लेकिन सही से होल्ड नहीं कर पाए, इनफैक्ट महज एक टच कर पाया और इसी के चलते पॉइंट गंवा दिया हर्षित। जी हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट वहाँ पर गंवाया है।
और अब क्या महत्वपूर्ण समय पे देखिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है, एक बार फिर से चलिए नितिन धनकर ने आज फिर से अपना सुपर 10 पूरा किया है। ये है मिस्टर कंसिस्टेंट, ये है नॉन स्टॉप नितिन धनकर। जिस तरह से यहाँ पर हर रेड में जिस तरह के पॉइंट लाने का प्रयास करते हैं, देखिए 14 रेड में 11 पॉइंट्स लेकर आना, यानी कि ये ज्यादा विश्वास नहीं करते, एम्प्टी रेड्स पर हमेशा बिजी रहते हैं। और इनका फुटवर्क इनकी सबसे बड़ी ताकत है, इनका फुटवर्क इनकी सबसे बड़ी शक्ति है और उस फुटवर्क का बहुत सा इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लग रहा है अगर आयुष कैसे भी अगर टडोबा टाइगर्स इस इंपॉर्टेंट समय में अगर ऑल आउट हो गई तो हम्पी हीरोज लगातार अपना तीसरा मुकाबला जीत जाएगा, लगातार 5वां मुकाबला यहाँ पर जीत जाएगा। युवा कबड्डी सीरीज में जो स्ट्रीक है वो चालू रहेगी, परंतु चलिए विशाल चहल इतना आसान नहीं होने देंगे। क्या एक सब्स्टिट्यूट होता हुआ नजर आएगा? जी हाँ बिल्कुल, एक सब्स्टिट्यूट आपको होता हुआ नजर आ रहा है। 2 मिनट 11 सेकंड है, अगर 2 मिनट 11 सेकंड कैसे ही बच गए ना टडोबा टाइगर्स ऑल आउट से, तो ये मुकाबला उनके पक्ष में जा सकता है। सचिन जगबीर बाहर गए हैं, सचिन जगबीर यहाँ पर बाहर गए हैं और आशीष अंदर आए टडोबा टाइगर्स के लिए। अर्षित, मुझे लगता है सचिन वो खिलाड़ी है जो वो एक कमजोर कड़ी थी अपनी टीम के लिए, स्पेशली अगर आज के मुकाबले की बात करें, क्योंकि जब वो रेड करने के लिए गए महज 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए लेके आए और यहाँ पे डैश करने का एक बार फिर नाकामयाब प्रयास। जब पिछली बार ये सब्स्टिट्यूशन किया गया था तब भी यही एफर्ट्स मारे थे जर्सी नंबर 21 ने, इस बार भी वही एफर्ट्स, और ऐसे कमजोर एफर्ट्स आपके ओपोनेंट को फायदे से ज्यादा आपको नुकसान देंगे। देखिए ये नितिन धनकर पॉइंट कमा नहीं रहे, उन्हें दिए जा रहे हैं लगातार। क्यों टडोबा टाइगर्स का डिफेंस ये समझ नहीं पा रहा है कि हमारे पास लीड थी, उसे बनाकर रखना भी एक बहुत बड़ा कारनामा होता है। और अब हम्पी हीरोज, देखिए मैंने क्यों आपको 1.5 मिनट पहले बात बोली थी आयुष को कि मैं हम्पी हीरोज को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, वो जानती है कि अपने किस मूव को किस समय पर लेकर आना है। देखिए चाहे 2 बार ऑल आउट हुई हो, परंतु अब जब समय है ऑल आउट करने का टडोबा टाइगर्स को और इस मुकाबले में जीत प्राप्त करने का, अगर ये सुपर टैकल नहीं हुआ ना आयुष तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। और अब मुझे इस मुकाबले में हम्पी हीरोज कहना थोड़ा सा हार्श लगेगा आयुष आपको, परंतु लगातार 5वां मुकाबला मुझे शायद जीतता हुआ नजर आ रहा है हम्पी हीरोज। खराब प्रदर्शन टडोबा टाइगर्स के डिफेंस द्वारा। आप चाहे 38 मिनट बहुत अच्छा खेले हो आपका डिफेंस, परंतु अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे, ओ सही समय पर सब्सिट्यूट होकर आए हैं, ये अच्छा फैसला था यहाँ पर कोच का, ये अच्छा फैसला था अनिल कुमार का कि सचिन जगबीर को सबसे पहले बुला लेना और फिर वापस यहाँ पर एक तरीके से डू और डाई रेड में भेजना। परंतु नितिन देसवाल बहुत जल्दी डुबकी लगा ली थी, बहुत जल्दी दिखा दिया था, ये डुबकी दिखा दी और जिसके चलते यहाँ पर बोनस जरूर मिला है। परंतु अब 4 से 5 पॉइंट की लीड हो जाएगी हम्पी हीरोज के पास। और अब आयुष मुझे लगता है कि टडोबा टाइगर्स की पकड़ से मुकाबला बाहर चला गया है। बिल्कुल, अब वो क्षण ज़्यादा दूर नहीं है जब महज औपचारिकताओं के लिए मुकाबला खेला जाएगा। 4 अंकों का फासला है, कबड्डी का खेल है, अभी भी 1.25 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, जो टीम लीड कर रही होती है उसकी यही होती है जो अभी आपने रेडर के तौर पर देखा कि महज बॉक्स लाइन को पार करिए, उसके बाद में नितिन धनकर साहब बस अपने कैंट को इस्तेमाल कीजिए, समय व्यर्थ करिए ओपोनेंट का। 17 सेकंड का समय अभी भी बाकी है। हर्षित, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी जो है मैच छोड़ के जाएगा नहीं, अंतिम के 5 सेकंड बचेंगे तब ये वापसी करेंगे अपने खेमे की तरफ। नितिन धनकर इनका नाम है। आहा, थोड़ा सा टीज करने की कोशिश, डीप जाना जरूर चाह रहे थे लेकिन नहीं, यही होना है परस्यूट, इसके अलावा और कोई चारा बचता भी नहीं है। एंकल होल्ड करने का प्रयास, चलिए 1 पॉइंट तो मिल गया टडोबा टाइगर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। विशाल चहल रेड करने के लिए गए थे और इस रेड के साथ 11 पॉइंट्स इन्होंने अपने इस मुकाबले में पूरे कर लिए। कॉर्नर के खिलाड़ी थोड़े से जज्बाती हुए और जज्बातों की जगह है नहीं, खेलिए कबड्डी का। संदीप पॉइंट गवा बैठेंगे और पॉइंट तो यहाँ भी मिलेंगे हर्षित, पॉइंट तो यहाँ भी मिलेंगे। देखिए ये होती है दूरदृष्टि न रखना, मैंने आपको कहा था कि दूरदृष्टि रखना। देखिए आयुष, मेरे मुताबिक अभी जरूर बतौर खिलाड़ी आप हीट ऑफ द मोमेंट में अक्सर, और देखिए बहुत सही कर रही है हम्पी हीरोज, बहुत सही कर रही है हम्पी हीरोज कि 1-1 पॉइंट दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार संदीप ने बहुत अच्छा किया, इस बार नितिन देसवाल ने बहुत अच्छा किया। अच्छा क्या किया आयुष, मैं बताता हूँ आपको कि देखिए जैसे ही वहां पर विशाल चहल बोनस ले गए थे, संदीप ने कहा कि चलिए बोनस नहीं दूंगा, एक टच पॉइंट ले जाइए, और वैसा ही कारनामा नितिन देसवाल ने कहा कि बोनस नहीं जाना चाहिए, यानी कि एक रेड में 2 पॉइंट नहीं जाना चाहिए, और लगातार यहां पर पॉइंट्स देगा अगर टडोबा टाइगर्स का डिफेंस। तो मैं कहना चाहूंगा कि रिंकू को वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, रिंकू को वो गलती नहीं करनी चाहिए थी जो अब गलती सचिन ने की है, वो भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगला रेड ये रेड हो सकता था डू और डाई रेड आए,
अगर वो गलती नहीं करते तो ये रेड डू और डाई रेड आता और एक और पॉइंट मिलता। तो इसके बाद इस रेड में आपके पास 2 पॉइंट अगर आप लाते तो स्कोर बराबरी पर हो सकता था, बोनस प्लस अगर आप टच पॉइंट लाते, परंतु अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होती है छोटी छोटी गलतियां जिससे मुकाबला आपके लिए दूर हो जाता है, जिससे फाइनल आपके लिए दूर हो जाता है। टडोबा टाइगर्स आप विक्ट्री डिजर्व करते थे, परंतु इस डिजर्व को आपसे छीनता हुआ नजर आया है हम्पी हीरोज का प्रेजेंस ऑफ कबड्डी, इनकी दूरदृष्टि, इनका आत्मविश्वास जो हम्पी हीरोज से आज फिर से हमें देखने को मिला है। और इसलिए मैंने कहा था कि अनुशासन, दूरदृष्टि और निरंतर अभ्यास ये कबड्डी के 3 मायने सबसे बड़े हैं और इन तीनों मायनों पर खड़ा उतरा है हम्पी हीरोज का खेमा। आयुष, आप क्या कहेंगे? इतना एनालिसिस आपने हम्पी हीरोज का कर रखा है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं पार्ट टाइम वीडियो एनालिस्ट तो नहीं है आप इनके स्क्वाड के। बहरहाल जोक सपाट मुकाबले की बात करते हैं तो ये कुछ हाईलाइट्स है, कुछ गलतियां जो सेकंड हाफ में हमें देखने को मिला। जिस तरह से मुकाबला शुरू हुआ, वहाँ लगा था कि नेक टू नेक ये मुकाबला होना है। अंतिम के 1.5 मिनट में ही मुझे लगता है टडोबा टाइगर्स ये मुकाबले से ग्रिप गंवाता हुआ नजर आया। इस तरह से जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे विशाल, उन्होंने डुबकी लगाने का प्रयास भी किया, सफलता भी वहाँ मिली। और वहीं ओपोनेंट टीम को जब डर दबोचने की बात आई तो कॉम्बिनेशन टैकल्स में भी आपको वही खिलाड़ी नजर आए जिन्होंने रेड पॉइंट लेने की कोशिश की थी। कुछ शानदार से डैश भी हमें देखने को मिले। स्ट्रगल्स की बात की जाए तो वो भी इस मुकाबले में देखने को मिले और किस तरह से अपनी गेंद को इस्तेमाल किया जाता है, विपक्षी को चकाया जाता है परफ्यूज के साथ। वो स्किल्स भी दिखाते हुए नजर आए हैं यहाँ पे हम्पी हीरोज के खिलाड़ी। हर्ष, बिल्कुल वो जीत की भूख आपको नजर आएगी, परंतु देखिए आप जीत की भूख पूरे 40 मिनट नहीं दर्शा सकते। देखिए कहने को 40 मिनट कम होते हैं, परंतु 40 मिनट बहुत समय होता है कबड्डी के मैट पर। जिस तरह से नितिन धनकर ने वापसी कराई है, वापसी का दरवाजा एक बार लग रहा था बंद हो जाएगा हम्पी हीरोज के लिए, परंतु नितिन धनकर उसकी दूर जाकर चाबी ढूंढ कर भी लाए और वापसी कराई। विशाल चहल ने आज फिर से इन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, नो डाउट। इन्होंने अपनी टीम के लिए एक सुपर 10 भी बनाया है, एक टैकल पॉइंट्स भी लिया है, कुल मिलाकर 14 पॉइंट्स लेकर जाएंगे। परंतु आज फिर से डिफेंडर्स ने जो गलती की है उस गलती को आप कैसे भूल सकते हैं। चाहे टैकल पॉइंट्स हम्पी हीरोज के पास कम हो, परंतु ज्यादा अनसक्सेसफुल टैकल्स नहीं किए हैं। अगर आप उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं हो तो मेरा कहना ये होगा कि आप वहां पर एक्स्ट्रा ट्राइज मत कीजिए। आपको महत्वपूर्ण समय पर आपको समय की कीमत समझना होता है। ऑल आउट पॉइंट्स टडोबा टाइगर्स के पास जाता है, टैकल पॉइंट्स ज्यादा है, परंतु रेड पॉइंट से पता लगता है कि टडोबा टाइगर्स के डिफेंस ने लगातार गलतियां की है। यह मुकाबला टडोबा टाइगर्स की जेब से निकाला है और अपनी जेब में डाला है हम्पी हीरोज ने। चलिए अब बात कर लेते हैं हम्पी हीरोज 3 में से 3 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स पर मैच आपको 5.33 नजर आएगा, जिसके चलते दूसरे पायदान पर मौजूद है। पॉइंट्स पर मैच के हिसाब से यहाँ पर ये अंक तालिका है। आयुष हमारे सभी दर्शकों को बता देते हैं। और टडोबा टाइगर्स देखिए 3 में से 3 मुकाबले हारे हैं, सेकेंड लास्ट पोजीशन पर हैं। लंबा उन्हें सफर तय करना पड़ेगा फाइनल के लिए अगर ऐसा ही चलेगा। अगला मुकाबला कहीं मत जाइएगा दर्शकों को कि अगला मुकाबला होगा एक और बड़ा मुकाबला जहां पर चट्टान सी कड़ा प्रतिद्वंद देता हुआ नजर आएगा। अरावली एरोज पेरियार पैंथर्स को। पेरियार पैंथर्स क्या वापसी कर पाएंगे, जानेंगे आप सभी के साथ अगले मुकाबले में जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का।
आंकड़ा खोल नहीं पाई है, जीत का खाता खोल नहीं पाई है। पहला मुकाबला आज के दिन का जो था उसे हम्पी हीरोज ने महज 3 पॉइंट से जीता। एंटरटेनमेंट से भरपूर वो मुकाबला था। दूसरा मुकाबला ये बड़ा मुकाबला है और आज के अंतिम मुकाबला होगा मुरथल मैग्नेट्स वर्सेस काजीरंगा राइनोस। पर चलिए अभी समय है इस मुकाबले को आप सभी तक पहुंचाने का, और पहुंचाना है तो सर्वप्रथम हमारी दोनों टीम को मैट पर आमंत्रित करना होगा। लेट्स इनवाइट फर्स्ट पेरियार पैंथर्स। और चलिए अब पैंथर्स को यहां पर टक्कर देने के लिए आ रही है हमारी दूसरी टीम अरावली एरोज। Good evening everybody here on this spectacular Sunday evening, and this is match number 2 of this day, of this today, but overall match number 109, and we are here in the Sanskar School Jaipur's arena, and from Jaipur live coming on fan court with the Pegar Panthers starting 7 in front of me, as both the Naveens will look out for the corners and Rinku and Sagar will support Ashish Narwal. Good to see back in the side Ashish Narwal, because yesterday he got a slight twist in the ankle. Then it's nice to be seeing him making a comeback, and then we have both the covers as Ashish Umaid and Anish just trying to do a better job in the covers. Right, so this is going to be a really big match for Periyar Panthers, because they are in the bottom of the table, and we will start talking about how important summit round is all about, because place 3 on the challenger round points table is Aravli Arrows, where we have Lokesh Gosalia and Mahendra Chaudhary in the corners. Jai Bhagwan will be supported by Gangaram and Ram Kuwar, and the Gurjar Bhaichara in the covers will try to make the same impact as they have been doing, because they are also coming in with a loss against Hampi Heroes, and Periyar Panthers coming into this match with a loss against the Kaziranga Rhinos. That's a big loss, 53-25 against their favor. And I have today with me Radhika Reddy alongside in the commentary box to look out for the men to watch out for. Radhika, good evening. Good evening everyone, thank you so much, and this is the challenger round, and this is going to be real challenging for the Panthers, because they are definitely looking for a win, and this person Ashish Narwal, the lead raider, need to fight yet again. He had 315 raid points so far with 18 super 10s, but then he need to win the matches to stay in the league, because if you stay stronger on the higher, you will be in a better position. Yes, a lot of responsibility on this raider. He is being on and off, but then look at Jai Bhagwan. He is being tremendous when he required raid points is 182, 12 super 10s, and raid strike rate is beautiful with 73%. So he's been contributed well to the team, and they have a loss and a win in the challenger round. All credit to this person as well, who's been brilliant on the mat. The toss was won by Aravli Arrows, Kapil Gujjar, and that was the update. But the biggest update coming in from today will be the discussion of the summit round, because summit round is so important, starting from the 30th of this month. Just 3 to 4 days to go for that summit round to begin, because Periyar Panthers lying bottom of the points table in the challenger round, just winning 15 of 24 matches, will be in a spot of bother, because in the summit round we have 2 qualifiers and an eliminator to begin with. So the top 2 place team, that is first and second team, will get a lot of chances to go through to the finals of the Yuva Kabaddi series, and the qualifiers too will have rank 3 and 4, and then the eliminators will have the bottom placed 2 teams. So Periyar Panthers will be thinking to go up the ladder. Aravli Arrows placed 3rd on the points table will be looking to finish 1st or 2nd, because winning 13 matches out of 25 is not what they will really want to do, because this is a competition between the Bhim and the biggest Panther. Yeah, there you go. Bhim, Jai Bhagwan is there to
support the Aravliados to go up the ladder. Right, we'll keep talking about that summit round along this match as well. And let's go into the countdown to begin this match. (109) and Periyar Panthers yesterday were really deflated with the power that was shown by the Rhinos. Ashish Narwal could not get the Super 10. Navin Sharma couldn't score a single tackle point. But now the first rate from the biggest Panther from the right to left of our screens is Ashish Narwal getting into the Aravali Arrows den here, Radhika. Absolutely, Ashish Narwal with 315 rate points under his belt. He is definitely one of the best raiders in the tournament. So he needs to start off first, but then look at the momentum. He could not stop his speed, got into the lobbies without the touch. So he is self-out in the first raid itself, which is not a good sign, Naveen, for the Panthers to start off again. Yeah, he's trying a little too much is what I'm feeling from yesterday, because the pressure is on him. All the cameras, all the angles and the spotlight is on him. So he just needs to calm down. And credits to Mahendra Chaudhary in the previous occasion on that right corner for the Aravali Arrows going away in a right way. And now credits to the right corner of Periyar Panthers to dash away Ram Kuwar in that fashion. Navin Sharma's first tackle point of the day today. Yeah, that is from the right corner. Dangaram comes in with a beautiful dash and a tackle point being awarded for the Aravali Arrows. Now, we are talking about this raider who is been brilliant throughout. Yeah, Rinku, he'll have to somewhere try and see if he can get that first rate point, because already the Aravali Arrows have understood how these raiders will rate, and placed bottom in the points table, of course, will be a worrying factor for the Periyar Panthers. As Bhim walks in, Jai Bhagwan, he was a little injured in the second half of the booster round, but then what a comeback he has been making, and with his energies and with his powers, he can actually bulldoze the defenders and go across, and this is what he's supposed to do. But no, under the chain, and with a chain tackle from the left flank, really well done by Navin J and Ashish Narwal to knock down the biggest beam. Perfect timing and anticipation. They anticipated the raider would go low from the chain, so they have gone with a low chain tackle. That was a good one. And number 17, Sagar. 1 versus 5. Bonus is not on for the raider, but then you need to, if the game is not going in your favor, you need to, understand when to pace up the game, speed up the game pace, or when to control the game pace. That is what needed to be understood by the Panthers, because Naveen, what I understood, in the last two matches, they have lost with a big margin. 29 points and 28 points is a big margin. When they think they are losing it, they should try and control the pace of the game. Very much. And another strong ankle hold. Today, the Periyar Panthers' right corner, Navin Sharma says, I am the second best defender in the Yuva Kabaddi series, and I will not let it go just like that. Look at that, very strong ankle hold. That's the second point, and he did not even want the support of the covers, because yesterday he was pointless. I mean to say, even the intention and even in the tackle point, he was really looking pointless against the Kaziranga Rhinos. But today, already 2 tackle points as Ashish Narwal comes in for a 2-odd raid. Yeah, in the first raid, he was self-out. Now again, 1 versus 4. The defense looks stronger, but then look at the TP put off the court yet again. Yeah, he's a little not so effectively moving around. The double tie hold coming in very strong from Mahendra Chaudhary from the right corner, and actually why he is not moving very swiftly, I guess yesterday there was a little twist in the knee for Ashish Narwal, but happy to see he's on the mat very quickly, because even yesterday, even when they were losing, he wanted to come back and raid for his team to save them somewhere. But nice to see he is back, and I guess he's carrying a little bit of injury
for sure, because it is not enough recovery time that he had got. It's just between that one night that he had to rest his knee and come back. This is Sagar. Sorry, it is Rinku from Perrier Panthers. Now, look at them. There is no Ashish Narwal there. He doesn't need to go deep in if it is not required or do or die raid, because the defense will definitely support them. They need to understand when to go in and when to, play safe there. Yeah, that was really well thought by Rinku. Came back with an empty raid, but Ram Kuwar is there to support Jai Bhagwan along with Gangaram. Goes in for the bonus. Right cover comes in with the dash, but Ram Kuwar gets through. They are debating. They are definitely debating on that. Anish was the man in question from the right cover, and it looks like Ram Kuwar has got it. Radhika? I mean, he was pretty much in contact with the ground, so he should get through. Yeah, and also just for confirmation of all the viewers watching this on Fan Code Live, so even if you are in the air, you have to be inside the lobby's lines. You can't be outside the lobby in the air and cross the midline. You'll have to be, even if you are in the air, you'll have to be inside the lobby line. But here, Ram Kuwar was safely there, planted his right leg inside the lobby when the dash came in from Anish. So that's a really good raid. And that's the equalizer that they wanted. Yes, after the bonus attempt, this raider, Rinku, falls forward to take multiple points. But then the bonus has not been awarded, but gets the right corner defender. Yes, very much, very much. First tackle error by Mahendra Chaudhary. And Rinku coming across as the winner to cross that midline. But it has been that slow-paced game because both the teams understand the importance of the victory. And Jai Bhagwan, first the dash and then Navin Sharma with the ankle hold. Look at the dash from the left cover, coming in so strong. Yes, he did not falter this time around as well. Initially, we have seen a block from him, a dash from him, and now a brilliant ankle hold. Yeah, did you notice that, Radhika? It was a little happy surprise there because Ashish Narwal was there in the left cover. I just thought he came in for an assist, but no, he initiated that strong block in front of Jai Bhagwan. So if your raiding is not clicking, he is happy to help in the defense, but you should understand that it's not the main motto of him. But it's nice to see when such brave moves come off in your favor. But when they don't come off, people will start questioning, अरे ये तो नहीं करना चाहिए था आपको रेड में लगाए थे हम लोग. But now he is in the proper position of the left hand back. Come on, the Perrier Panthers are doing it around in the tackle points, and Ram Kuwar has been pinned down. They did not let the raider set in. He did not go for that footwork even. The right cover was so strong that he could block it. And this is 1 versus 3, a super tackle situation for the defense, but defense haven't shown up for Aravali Arrows yet, so that need to be taken care by, now he has to come into his real form. Ashish Narwal here. He's got all the opportunity and he's done this many occasions before. As Mohituda sees that with careful eyes and anxious moments there for him, but he came back empty-handed. But this is the time for Govind Gurjar to try and save his team. Kapil Gurjar believes a lot in Govind Gurjar as a raider, and I guess he has delivered for I think 40% of the belief, but belief is lot more from his captain on Govind Gurjar. Look at that. You just can't be blinded. Navin Sharma was already going behind Govind Gurjar for the back hold, but then he was conscious. Time for action. Situation. Will Ashish Narwal? He's not got a raid point. The first raid he went out with and it's been dusted. Going to the slap. He is happy, but we'll have to see if Ashish Narwal actually made it through. I do not understand this because it is not what we really saw. Radhika, your call on this. Looks like Ashish Narwal would be taken off the court because he was in the air when he landed in the lobby of the opponent court.
It looks like a super tackle to me though. Yeah, and that is why the referees are going in for the video referral, because it is allowed for Sumanji to go for the video referral from the referee side. And in the challenge round, it's very, very important to get all the decisions right, because the team's placings, the positions of the teams on the points table is very, very important. And she politely chases off Kapil Gurjar away. That is what I like about Sumanji as a referee. She understands every single bit of the game and she's very clear in her decisions. Look at this ultra slow motion. Block comes in after the ankle hold attempt. It was really strong one there by Lokesh Gosalia, and he actually toppled him over. Look at that. Ashish Narwal, because of the yoga body that he got toppled over. He did not cross the midline, but he directly landed on his half of the court. And that is what actually prompted Mohit Hudaji to stand up and clap. There we go, 2 points. Ashish Narwal gets his first 8 points of the match with a dramatic fashion. Yeah, just because the toppling over landed in the opposition's court, that is in the court of Ashish Narwal. That is what saved him. If he was completely gushed out by Lokesh Gosalia's dash, it would have been a super tackle. But now, it is down to the captain of the Aravali Arrows, Kapil Gurjar, who is always happy to keep changing positions in the defense, who is always happy to send in Govind Gurjar as a raider, now has to do the job himself. On the back line, he is trying to get those defensive rating points by the defense, but then the defense is not enough. Oh, luckily he's got a point and a revival too. Oh, that was really lucky. That's the word, because left cover, look at that. Oh my God. There was not even a bonus attempted. No coordination between right corner and left cover. That was clearly seen. Ashish Umaid and Navin Sharma will have to talk before the tackle attempted, not after the tackle was unsuccessful and the Raiders got a point and a revival and saved from an all-out. Now, Gangaram and Kapil Gurjar. Jwalaram we call him. Can he show some Jwala? Come on, no way. Ah, that was unbelievable. Mohit Hudaji is really happy. Gangaram fell into the lobby. And it's the first all-out inflicted on Aravali Arrows. Now this will bring some momentum to the Panthers and also to Ashish Narwal here. He's got that confidence now. He went deep in and he's got those points. A quick rate point after the in. Yeah, Jai Bhagwan showing his quickness right in. Look at that, Ashish Narwal. Come on, you've been lucky once and you cannot be lucky always. Every day is not Sunday. I understand today is, but his Sunday is already gone with the strong block that came in against Jai Bhagwan on that previous occasion. But now trying for an ankle hold on Jai Bhagwan. Come on, it's going to be difficult. And now the defense of Aravali Arrows finally coming together from the left cover, a chain tackle to put down Rinku. Yeah, a combination and a second layer of defense did contribute to that tackle. 6-point score difference, which is in favor of Periyar Panthers, which is a good sign. Remember, they have lost all the 2 matches they have played in the challenger round. Though they have finished second in the booster round, it's got tough for them to lose those 2 matches, and they are on minus points when you look at the score difference as well. So they need to win this contest to be there in the tournament, so that they don't have to be at the bottom of the table to face a lot of challenges ahead. Yeah, helping that cause is the right corner today is Navin Sharma for the Periyar Panthers. He's not put in a single unsuccessful tackle. All 3 points very successfully done, and he sent out Jai Bhagwan on the bench. And now it's a proper positioning of the... I can see Kapil Gurjar in the right cover. He has to go back. Ashish Narwal claims the point on him. Mohit Hudaji is happy and says, Shabash. Yeah, that's what we wanted, what he says. And Navin did not contribute in there. And look at that right cover. Kapil Gurjar could not go back. Look at the reach he had. So he need to be more confident about his hand touches. He need to come into his true colors. So because just that he is one of the best raiders in the league. He need to show up on the mat when it is most required. The defense should not falter, as we say. Only 2 unsuccessful tackles so far, which is a good sign for Panthers. Yeah, but for the Aravali Arrows, Radhika, the support system is not working.
Even if Jay Bhagwan is getting some points here and there, I am not seeing Ram Kuvar getting his own points. He is struggling, and of course Gangaram is really struggling. So somewhere the Raiders are not firing for the Aravali Arrows. The Arrows are looking a little blunt today against the Panthers, and they are unable to attack. But let me just remind our viewers, or rather start telling this in a very clear fashion. We understand that it's going to be a little more to take in when you hear it for the first time, but it's easier. It's happened before. You've seen it in various other tournaments and series and leagues. It's happened before. It's very easy. As we talk about the summit round, the first two, the top two place teams, and Gangaram does a brilliant toe touch on Naveen Sharma to eliminate him. I think that's the first time he's going on the bench, Radhika, Naveen Sharma. Absolutely, because he tackles, he's been successful, but this time he's been bad, and that was a beautiful toe touch and looks like a targeted raid from the Raider, which is a good sign for the Aravali Arrows. Now, Raider, he's been phenomenal throughout the, and he needs to perform when it is required, and today I see that fire coming in again. Yes, initially the fire was not lit. But now, look at that! Right corner does not go back. Mahendra Chaudhary stands where he is, and Mohit Hooda, always as expressive as he can get. Double tie hold, so way above the back line, and then the support came in from Lokesh Gosalia to pin down Ashish Narwal. Right, just reminding our viewers on Fan Court, see what happens in the summit round is when you finish on top 1 and top 2, you will be playing qualifier 1 as a team. So if you win in that match, you directly go through to the finals of Yuva Kabaddi series. Simple. No problem whatsoever. Let the other 5 teams struggle and do whatever they want to. You finish on top 1 or 2. You play qualifiers 1. You win the match. Go through. That's it. Go through the finals of Yuva Kabaddi series. That's it. No more hurdles. Right? But then, if you are losing in the rank 2, if you are losing in the second position, you will get another opportunity to play the third qualifier. Okay? That aside. But for the third place and the fourth place teams in the challenger round, will be playing qualifier 2 as Beren Gurjar goes in for a pursuit. So qualifier 2 is a little tricky, and we'll keep explaining about it, Radhika. Yeah, he was smart enough to go for that pursuit, but the Raider was quick enough to escape from there. Now, Saga, 1 versus 7 full strength, so bonus is available, but they know when to fire, because the storm is on their side now. They have enough lead to carry forward. Oh, action about to unfold in a 2-on-1 raid now for Gangaram. He's not got Naveen Sharma in the right corner, but still gets 2 points. Here's the Jwalaram, and he started to show his hotness and spiciness when he raids. Now, this was not required from the defense, because you are in a setup of a 4 or 5. The defense does not need to, show up there. It's a Raider when it's a do-or-die raid. Why do you forget that? You have lost 2 points easily. And this is a do-or-die raid, and if it's a do-or-die raid, you can't play on a bonus if you're not sure. Rinku, you need to go for the touch. Yeah. I guess somewhere Mahendra Chaudhary is letting the bonus go. But what has Rinku done? In the hunger to revive somebody, he's not even got the bonus. He's not even got the bonus. Look at that. Strong left corner coming in at the right time. Lokesh Gosalia with a strong double tie hold. I think somewhere Rinku lost his footwork also, isn't it, Radhika? He just went in and got stuck in that left flank, as Jai Bhagwan easily gets another point. Absolutely. Now, they are coming into the real fight now, and they would love to equalize the score. Look at that. Of course, the right flank did not come to support, because he know that he can get some points when he comes for raiding. But the defense is showing up for Aravali Arrows, and this was the bonus attempt that was successful now. It was successful, but Gangaram, look at that. Once again, a surprise tackle from the left in. And now the Periyar Panthers have been pushed into the all-out by the Aravali Arrows to make a big comeback. And it all started with Gangaram's toe touch. If you remember, he started off with that swift toe touch on Naveen Sharma, and then it all started. So
So now the match equally poised with just 3 minutes to go in the first half as Jay Bhagwan raids in. So just talking about that summit round once again. Oh, that is another strong message by Ashish Narwal. Look at that. That's the second time he's got Jay Bhagwan. He's targeting him. He is definitely targeting him. I mean, we've been talking about, both the Raiders are the biggest Raiders of the league and there would be a competition in the rating. But the Raiders are taking as a defender is a good one to see. If he could not target rate the Raider, he is targeting as a defender from Ashish Narwal. That's a good one. And Rinku here quickly attempts for a bonus. But then, yeah, he gets it too. So it is 2-1 in favor of Ashish Narwal now against Jay Bhagwan. So Jay Bhagwan, I have seen him go in with the defense when the defense is not doing really good. And Gangaram actually got an escape route. He actually found an escape route in between the defenders, but somewhere he was stopped by going towards the midline. The teamwork, the second layer of defense has shown up when it is required. Yes, they are pretty much in the contest now. Periyar Panthers, they have started strong with this man inflicting the all out. But then, defense, when, as we say, in the do or die raid, when Aravali Arrows got those 2 points, they were down to 2 to 3 men. And after that, Aravali Arrows have taken up that point. And this some confidence for the Raider. Yeah, Ashish Narwal, because he was not doing well in the raiding department, he went in, put in 2 tackles, and then look at the confidence to go in so deep and get his hand touch on Lokesh Gosalia. He was really confident. So left corner, standing in very deep, he did not make any error, but somewhere he would have wanted Mahendra Chaudhary to come across. But even Mahendra Chaudhary staying back, thinking it would not be a good idea to go ahead and attack the biggest Panther when he is hungry. But Ram Kaur needs to play like the real Kaur. But he is not able to do that today. But talking about the summit round, just another pointer to be told. If you are finishing at number 3 and number 4 on the challenger round points table, you will be playing a qualifier 2. And when you play a qualifier 2, if you lose, you are out. You are disqualified. You are eliminated from Yuva Kabaddi series. And if you win, then you will play qualifier 3 against the loser of the first and second place team. So this is a really good format as Ram Kaur gets his raid points against the left corner, Naveen J. Man, the Raiders' face was facing to the midline, so that was an easy route to escape for the Raider though. Now 3 points in favor of Panthers. He should go for an empty raid now because they'll have time to think about how they started and how they started to give up the points. Now, because as we talk, Periyar Panthers definitely are one of the best sides in the series. They want to be a winning side. Now, very much. They start off with a win in the round today. Yeah, very much. And that's the end of the halftime. And just a slender 3-point lead for Periyar Panthers. 19 for them, 16 for the Aravali Arrows. And somewhere Ashish Narwal is getting some confidence in the tackle points, if not the raid points. And soaking in some highlights of the first half. It was tough to begin with for Ashish Narwal because in the first ever raid of the match, he could not control the pace. He could not control his own speed. And he was self-out going to the lobby without any connection against the defense. But Ram Kaur also has struggled. But Naveen Sharma today is been seen in his original self. He has put in a lot of tackle points. And this is the story. As Ashish Narwal was struggling in the raid department, he came in as a defender to attack and target Jay Bhagwan, especially targeting Jay Bhagwan. And then got this all-important 2 points to inflict the Aravali Arrows into the first all-out as Gangaram fell the lobby himself. Nobody actually supported him as Kapil Gurjar also could not do anything. So that was the first all-out for Aravali Arrows. They came back with this raid as Gangaram did those toe touches and 2 points. And then Periyar Panthers were pushed into the all-out. So it was all happening. And then somewhere the momentum of the first half going to the Periyar Panthers, Radhika. So that was the conclusion of the first half. And just looking at the scoring, and I guess this is the right time to even just tell about the eliminator of the summit round.
So you forget if you are playing fifth and sixth position. It is like traveling to Shimla by walk from even from Manali or Kulu. You're walking up towards Shimla. That's what happens in the eliminator if you are placed fifth and sixth, because it's a long route. It's a very, very long route. So forget even playing fifth and sixth. So that is the teams which will be having the longest route. So it's better to finish in. It's best to finish 1 and 2. It's better to finish 3 and 4. And it is actually a little tough if you're finishing 5 and 6 on the challenger round. Absolutely. Periyar Panthers are right now standing on the 6th spot because they have lost all the 2 matches they have played. So it is important for them to win and climb up the ladder, because they have been consistent throughout the series and they want to be there upright there, at least, if not 1 and 2. As Navin said, 3 and 4 is better than staying at the bottom. And as we talk about the rate, both the teams have got equal rate points, but the defense better by Periyar Panthers today, wherein Navin Sharma had 3 and also Ashish Narwal had got 3 defensive points there. So it's a slender margin, as we say, for Panthers, but then momentum is something. Ashish Narwal got deep in to get those touch points, which is a good sign for the Panthers. Yeah, very much. The first raid of the second half is started by Jay Bhagwan from the left flank. The right cover, I guess, has got him. That's what Sumanji is trying to say. Okay, she'll go and consult her colleagues. It was a good dash. Came in from Anish, the right cover. Raider safe. There we go. So Aragliaro starts off with the first point and the raid point. Now look at that. The dash came in little late, so the timing was not right. But Ashish Narwal yet again, he's trying to read the defense still. He is good at those toe touches and also those running hand touches. He should execute that. Just go deep in and try to be yourself. On the line, nothing given. Yeah. Radhika, I want to ask this to you. Have you ever climbed and like walked from Tirupati to Tirumala? Have you walked the stairs? I did, yes. Yeah, that is what Periyar Panthers are currently facing. Right, to go to the summit round, but there we go. Another tackle on Jay Bhagwan, and to stop the beam, entire Panthers arena is just falling on him. Because he is the key raider for the squad for Aravalli Arrows, and if they pin them down, it is a good sign for the Panthers here. Yeah, it is very easy to just sit and talk in the commentary box, but I understand how much will be going through those players finishing in the 5th and 6th position, but that is what it is. Your efforts in the entire series will be valued if you are finishing 1st and 2nd, and you will be rewarded in the summit round, because you just have to play one match. That's it. Qualifier 1 if you are 1st and 2nd, and you will be going through the finals if you win that match. And what did Govind Gurjar do? I really did not understand. He just wasted a raid for Aravalli Arrows. But nevertheless, Ashish Narwal has come in for a do-or-die raid as Govind Gurjar is on the left corner. But mind you, the next raid for the Aravalli Arrows can be decisive. And a strong tie hold, single tie hold. Thank you so much, says Ashish Narwal, as Govind Gurjar also supports and gives him another point. That was really unnecessary there by Govind Gurjar. He did not even attempt for those raid points. The defense came in to support the raider. That was a really, really, not appreciated from the Aravalli Arrows defense when it was a do-or-die raid. And we see in the crowd, Tejasvi, the president of Rajasthan Kabaddi, is sitting there appreciating the efforts of the defense. That's a good one. Yeah, alongside with him is my very good friend Ashwin as well, sitting and talking to all the dignitaries, because now this is going to be a super tackle situation as Navin Sharma is charging in to I guess waste a raid. If the defense is, come on Gangaram, come on my friend, you're doing this for the 2nd time. What is wrong with you and Kapil Gurjar? Oh my God, they are just digging their own grave here, Aravalli Arrows. They definitely are digging their own grave.
Looks like, Tejasvi Gehlot is quietly impressed by the raiding skills of the. This is very, very by the raider. And Yeah. this is a corner raider. Will you be able to revive any players? Tough for the raider, ground convert. But the defense showed up and it's the all-out point for the Panthers yet again. Very much, very much. See now what happened when Govind Gujjar went in for that unwanted and wasted a raid. Look at that pressure on Ram Kuwar, and once again Ashish Narwal. Oh my God, he's got some Chavanprash today of defense. He says, okay, if you target me in the defense, I will also target you with my defensive skills. He is actively contributing into the defense, and Aravali Arrows have been pushed to the second all out of the match. They'll have to do something here to come back, because the Periyar Panthers are leading this by 9 points and they know to win this big. Strong ankle hold. That is nice to see. Mahendra Chaudhary putting it, and the support came in at the right time. No problem for Rinku as he got the bonus. Yes, it got the bonus point, but then the dash was good enough. So each 1 point would be awarded there. And we talked Ashish Narwal. Not only is the best raider so far in the match, but then he scored 4 of 4 times. He attempted 4, succeeded in 4, which is a good one. So he is slowly turning out to be an all-rounder here, Naveen. Yeah, because I guess he's taking some revenge on the defenders as well, because this is a good raid by Jai Bhagwan. 2 very, very important points. The left cover did not come across in time, did not get the angle, and the power of Jai Bhagwan taking him through the midline. So now it is just that all-important 7-point lead for Periyar Panthers. So Ashish Narwal says, okay, if I do not get raid points as the way that I used to get earlier, I will take that revenge in the defense. And Mohit Huda Saab is actually thinking. And behind Mohit Huda, you can just see the dignitary sitting, and along with him is our very good friend Ashwin, who's done so well for the Kabaddi from the grassroots level across the nation. Everywhere, right throughout, starting from Punjab, Haryana, Rajasthan, everywhere, Gujarat, and even the Tamil Nadu, Karnataka. Look at that! Look at that! The Jai Bhagwan's force has pushed out a defender out of the end, and I think he should go back. I think he should go back, but he's put the defense at entire one corner. Naveen Sharma comes in with the pursuit. I think even Ashish Narwal has gone out. No! Out of boundary, only 1 point. Radhika, didn't you think Ashish Narwal got a hand touch there? I mean, Jai Bhagwan did it on Ashish Narwal. I felt it. It looked like a close call though, but then the referees will have a better view around. So I guess that's a right decision given. Now, it's a Periyar Panthers leading here. And when you look at the footwork of Ashish Narwal, it's a bit slow. I understand he's not quick on his feet, and he's just not giving enough ground to move on. He's just standing there to move on. Otherwise, he'll travel from left to the right and right to the left. So that should be again taken care. Yeah, as Jai Bhagwan comes in with a super tackle situation which is on, Naveen Sharma will want to tackle him down, but they'll have to be very careful as Periyar Panthers do not want an all-out at this time. Naveen Sharma gives it up. This is Jai Bhagwan's beam effect coming into play. Yeah, it was a super tackle situation, but the left flank was just watching him go deep in. Ashish Narwal is an ordered raid. Available for this raider, but then he should go for those touch points as well and also get those revivals for the team. Yeah, I like this 2-window shot that always get on the way to dress up, because now if Ashish Narwal revive somebody, that will be a huge bonus, but I think given the bonus. Okay. Very, very good thing. Mahendra Chaudhary actually gave away the running bonus. So that's a really good thinking from the defense of Aravali Arrows. Now Jai Bhagwan has got to do with only 2 raiders. Now come on, will Ashish Narwal show his defensive skills? Now will he have the ability to do it? Now can he go ahead and challenge Jai Bhagwan? I am not sure. And there we go, double tie hold comes in. And as he crosses the midline, the struggle is still on. He can still do it. Come on, Jai Bhagwan. No! 2 raiders putting Jai Bhagwan down in a super tackle. It's an anti-cross. It's an anti-cross wherein Ashish Narwal stepped into the opponent court. So it is a point awarded for the Aravali Arrows there.
he went to support the defense, but then his leg was dangling in the court of the opposition. Look at this one. Yes, here, Okay. he crosses, anti-crosses, so point is awarded for the Raider. Okay, so in that case, somewhere even Sagar is the only man now standing. So it's an anti-cross. So that's a good notice there by Yuradika. Then the dash from left cover. Sagar, has he saved somebody? Are no, says Sumanji, is it? No, that's 1 point for Sagar. So he saved the all out. Govind Gurjar once again the culprit for Aravali Arrows. Yeah, a revival being awarded for the Aravali Arrows here. But will this be an all-out raid from the Raider? No, the support here though. A single point being awarded for the Aravali Arrows. Yeah, so this time Jai Bhagwan did not have Ashish Narwal to actually come in for the tackle. So somewhere now Rinku has to do all this. Aravali Arrows are patients. They are really showing a lot of patience here for getting that second all out on Periyar Panthers. They have just left the bonus away. They've just kept the open bonus and not letting Rinku get a touch point. That is what they want, and yes, they have achieved it. They have succeeded it, and Mohit Huda Saab shows all the reaction that we want. So it's a second all out on Periyar Panthers, and Aravali Arrows make another comeback. Where is this match even heading? So another raid in by Ramkuwa. Very, very important for him to actually get in few touch points. Yes, the toe touch on left corner. That is really well done. And did not have any clue there that time. Look at that, it was so swift. Naveen J was taken as a casualty because he was casual. Come on, you can't be so unprepared, especially when a top raider like Ram Kaur is raiding. Naveen J actually took it very easily on that left corner and had to pay the price. You have to be on your toes, you have to be on the edge of your seat, because this Kabaddi game is the biggest blockbuster that any sporting world can see, as Ashish Narwal will go back with an empty raid and goes into the left corner now. Now there is something happening as Jai Bhagwan goes in as the right raider. So the left corner, Ashish Narwal, is already got 2 points against him. So it is in the favor of Ashish Narwal with 2-1 in the battle of the biggest beam and the biggest panther. The beam of Yuva Kabaddi series, Jai Bhagwan, is nabbed by Ashish Narwal twice, and once again Naveen Sharma comes in with a pursuit and gets the left corner. Oh my god, this is happening in a blink of an eye. Jai Bhagwan, I guess, should have got the bonus there, but then look at what happened. Naveen Sharma, yes, he got the bonus. Jai Bhagwan got the bonus, but then Naveen Sharma went into the pursuit and got Lokesh Gosalia in the meantime. So the score difference still remains at 2 points. Wow. All action happening here live from Sanskar School, Jaipur. And we really want to thank all our partners, our hospital partners, Metromas, in association with Dr. Abhishek Gupta, who's really good when it comes to sports injuries and joint replacements, and our voice of the event, FM Tadka, who always say apni suno. लेकिन आज आशीष नरवाल ने डिफेंस में अपनी तो सुनाई है, लेकिन रेडिंग में अभी टाइम है, उनको यही सही वक्त है उनकी सुनाने के लिए. The biggest panther now against the Aravali Arrows' defense of 6. What will happen? Govind Gurjar says, come on, I am the real defender, not just in the covers but even in the corners. I can do a much better job. He just went behind Ashish Narwal, completely blinded him away, did not even allow him for the turn towards the lobby and go, and he just pushed him away, and in the meantime he is just, I guess, injured himself. That's not a good sign for Aravali Arrows.
But then the defense was smart enough to put down Ashish Narwal when it is required. Now they should take the advantage of not Ashish Narwal not being on the court. Claims for a bonus, but nothing's given. 31-32. Look at this, how head-to-head they are going strong here. But Ashish Narwal not on the mat. Aravali Arrows should take in this chance to come back strong. Very much. And in the top corner of our screen, we can see Govind Gurjar getting some magic spray done in by our physio partners, UEM, University of Engineering and Management, as Rinku just shows his footwork on the block line and goes back. Does not even attempt to go in deeper. But they want to take this match to the they want to take this to the 40th minute, both the teams, and this is a good raid now for Jai Bhagwan. Because there is Ashish Narwal on the mat. Whom will he target? Naveen Sharma comes in with a goal. Jai Bhagwan has been pinned down in a do-or-die raid. Strong block from the right corner. Naveen Sharma. This was a real good one from Naveen Sharma, the right corner. So one raider is put off the court, and also this is Ashish Narwal who is come back on the mat though for the Panthers. So now, not having Jai Bhagwan in the Arrows wing, will Periyar Panthers snatch away this win? Yeah, that was really a big question, but look at what has happened as Sagar went in so swiftly and strongly towards the left cover. Govind Gurjar is kind of struggling with a little bit of injury. I should be actually looking at Ankit Jat coming in, or even Chetan Kumar to come in and fill up the position, because somewhere today Govind Gurjar, apart from that one strong back hold on Ashish Narwal, is not look strong, but I guess it's a 2-point raid. Is it, or has Naveen Sharma taken it from the inches of the ground? Oh, come on guys, we are here to talk. That is what even coach Shankar Saab is saying. Shankar Saab is also saying the same thing. Ram Kuwar says, I have touched the midline, see my fingerprints on the mat. And Sumanji goes for a video referral. Yes, Shankarji is actually trying to say it is 3 points, but let us look at it. We'll have to see that again. It was very quick. Ashish Narwal was trying to celebrate, and let us see it in the ultra motion. Naveen Sharma in question. Come on, it's a clear 2-point raid. I called that first, no problem whatsoever. And the video also actually going and confirming that, Radhika. Absolutely, looks like a 2-pointer for them. I mean, he clearly got into the mat of their own. So he just put his hand there, so which is a good one. It was an advanced tackle from the Panthers. Yeah, it is a confirmation now. 2 Aravali Arrows, so very much in the contest. This is going to be a nail-biting encounter for both the teams. A green card. Yeah, I like this. Naveen Sharma not just going off the mat, he also gets a warning. And because he was arguing so much, and that's what I always say, I am there, Radhika Reddy is there, and our other commentators like Navneet, Harshit, everybody are here to talk. Why should the players talk, isn't it? But this is the challenger round, and they don't want to skip those 2 points, which was a crucial point for the Arrows though. And very much. Ashish Narwal was just doing those, just doing that footwork, seeing some defense will get tempted with his footwork, and that did happen. Oh my God. Today the Gurjar Bhaichara is somewhere biting back Aravali Arrows, and that's not good signs. Kapil Gurjar not in his original form. Govind Gurjar making a lot of errors. Ram Kuwar goes in with a toe touch, and Rinku and Ashish Narwal says no way. They were swearing on the mat. But Ram Kuwar can go in deep. Now that's a really nice place to go in deep, because it is Ashish Narwal and Rinku. But Naveen Sharma playing such a high line defense from the right corner. I guess that was a trap that was being set in for Ram Kuwar. Aravali Arrows and Naveen, now when they have the opportunity to take those bonus points, they should attempt for the bonus initially. At least the score difference would be reduced by that, and they would not be under pressure going forward. But this is a good block from the right cover.
Very well done. Very well done. That's why Shankar Shab is actually going up and standing and applauding that. So he wants a timeout as well. And that was right cover Gangaram. Jwalaram showing a proper block onto the biggest Panther and taking him away off the lobby from the support of the left corner, coming in at the right time. But then, see what happened yesterday was Ashish Narwal, when he was going in for the appeal, or rather the request I should say, for the bonus points, and even today he did the same thing. 4 tackles, 4 tackle points for Ashish Narwal. Yeah, he's attempted 4 tackles today. I was just thinking to see why is Ashish Narwal's points coming in for the tackle, and that's what he's done, and that is what today he's been contributed enough for the team. Look at that. And he is the best defender of the squad today for Panthers. Along with the raiding skills, he is exhibiting those defensive skills which worked in his favor. But then a point difference in favor of Panthers. Aravali Arrows, now they don't have the bonus attempts, so they need to go deep in for those points. And if they get into the 2-order raid, it would be much difficult because today because is doing quite good, and it would be a multiple point raid. Very much. Now they are trying to countman. Jai Bhagwan, please don't talk is what that is what he says. You can hold your ears, Jai Bhagwan, but then it is all Sumanji to do the talking. Now, we were actually very impressed by Navin Sharma before this tackle, but his idea was right, execution completely wrong in the execution. The hand touch actually gave that 1 point, and then 2 points. It's a super raid. And what a time to come for the Aravali Arrows when they were just trailing behind by 1 point, Radhika. This has turned the match around. I mean, super raid means, 3 touch points there. So they are in the verge of all out, the Periyar Panthers. And at this stage, which we have only 3 minutes in the match to complete, if you get those all out points for Aravali Arrows, it would be difficult for the Panthers. As Rinku goes in and steals away a bonus point, takes away 1 more point, and just a 1 point lead now. Jai Bhagwan will try to finish this. Strong ankle hold, but no, cannot be successful. And it is a defensive point gone in vain. Good attempt by Anish, but cannot get both the legs of Jai Bhagwan. Look at that, it is very easily done. Once again, it is Rinku, Radhika, to save the Periyar Panthers as Aravali Arrows lead this just by 2 points. Now, there should not be any advanced attackers coming from the Aravali Arrows, and yes, they take down the Raider. Yet again, all of points awarded for the Arrows. Yeah, very well done by Lokesh Gosalia. Going in front of Rinku. Did not go back. Look at that. He left the chain very quickly on Jai Bhagwan and stayed where he was. And then the double tie hold came in at the right time to push away Rinku. And this is going to be tough now for the Periyar Panthers. 3 all-outs against them. 2 all-outs against Aravali Arrows. So that is the difference of the game. That is the crux of the game where Aravali Arrows are leading this by a mere 4 points. But do you think 2.5 minutes, 4 points, will that be enough for the Periyar Panthers to come back? Of course, when Ashish Narwal gets 4 points in 1 raid, that can be possible. Yeah, it could be anybody's game still, Naveen, because 2.5 minutes is a good time enough. 4 point lead is not a big margin in Kabaddi, as we say. 1 defensive error, can be covered by the other team. But Aravali Arrows are trying to kill possible on the opposite court because they are leading, and they would try and get those attempts only when it's a do-or-die raid now. But then Periyar Panthers, it would be a do-or-die raid every single raid going forward. And Ashish Narwal comes into a virtual do-or-die raid, I should say. And let me just see where is the defensive positions. It's nice to see Gangaram in the right cover because he's always been there. And I am not seeing Kapil Gurjar around. I am seeing Govind Gurjar in the left cover. Gangaram misses this. Oh my God. Oh my God. Is that going to be the raid that Ashish Narwal was trying to make a comeback with? 2 point raid now. Oh, that's a big error from Gangaram. Absolutely. Look at that. He would have gone with a chain. He went, single-handedly, which was not enough. That was a beautiful dupki.
on the way he touches the right corner as well, which is a good one. So just a 2-point margin. As we say, it could be anybody's game. Yeah, Mahendra Chaudhary actually came in to support Gangaram in the dash, but Ashish Narwal very brilliant and so swift in that taking that momentary pause and turning and under the hands of Gangaram. Oh, look at that. Navin Sharma actually threatening Jai Bhagwan, but Ashish Narwal comes in, goes out with a very quick raid. I guess now it's going to be Jai Bhagwan for the do-or-die raid. He's got all the options. He's got the 7-pack of Periyar Panthers. He can go in for the bonus. He can go in for the pro touches because he raids from both sides, and there you go. He's a right and a left raider. That is what Jai Bhagwan's strength is, and that is what Naveen J should have understood from the left corner. What is the point? You wait for the do-or-die raid of the opponent and you give away such easy point when it is required for the team. Now it's a 3-point lead. Aravali Arrows will not make any mistake to snatch this win from the Panthers. They might as well give away 1 point and just let the match go, because next 2 raids would be empty raids for Aravali Arrows. Now they would kill the maximum 30 seconds there. Blockline defense, that's not possible. Very much. Lokesh Gosalia tried that for the second time, but unlucky. He was lucky in the first time to nab Ashish Narwal so nicely in the back hole going behind him, but this time he got slapped away by Ashish Narwal, and this is good to see. Jai Bhagwan just waiting there. But you know what, Radhika? I feel, I understand it's a 2-point lead, but I feel as a raider, because there are 7 men on court, you'll at least go try a bonus. Show your fast footwork, do something. Because as a raider, if you're pinned down, it's just only 1 point. But if you're lucky, you get those extra points. And look at this. What if Ashish Narwal gets 2 points? Come on. That's a 1 point now. So it's a 1-point victory if I see. If they can pin it down. And look at that. Strong hands and just 1 point. So it's a tight game, actually speaking. Yeah. Naveen, what we see is, the defense, they would give away only 1 point whatsoever. Now the blockline defense, as we say, to get the raid legal, the raider has to cross the blockline, and he did it. Yeah. And look at that 1 point marginal loss is a big, loss for the Panthers. It's not a big score, but then it's a big loss yet again for the Panthers. Look at Mohit Udasab. Someone go and console him, please. Today the Periyar Panthers have played well. They have really played well. But Aravali Arrows winning this by 1 point, as Radhika you were mentioning. Losing it by 1 point gives a bigger heartbreak than losing by a more point difference. Isn't it? Just losing it by 1 point is a bigger heartbreak, and Mohit Udasab does not even want to come on the mat because he understands. He is very emotional when it comes to the Periyar Panthers. And Shankar Saab with all smiles shakes hands with everybody. Mohit Udasab does not want to even come on the mat. He goes off from the back gate. That is really disappointing, and that told the story of the entire match. Because somewhere Periyar Panthers can't get that 1 point out of this match. So in the challenger round, they have put up points on their name, but it is just that one solitary point that they get out of this. They still have to win a game. Here. And that's going to be difficult going into the summit round starting Thursday. That is 30th of July. Absolutely, because when you have lost all the 3 matches played when it is required in the challenger round, you being best teams in the series, you just lose it when it is much required. It is waiting for the team, Nabi. Very much as Periyar Panthers need to rethink about this. And yes, Mohit Udasab has done everything right today. And somewhere the Aravali Arrows were a little better when it came to that inflicting the all-out. And this was the last raid where Jai Bhagwan was actually going in for the block line as if he was going for a bonus line. So that was so important to make the raid legal. And a last point victory, 1 point victory on the Periyar Panthers, giving them a bigger heartbreak than a multi-point win or a bigger marginal win. Right. So 23 raid points, 24 Periyar Panthers somewhere better, but the tackle points, and the most important thing was the all-out. The all-outs were bigger in terms of Aravali Arrows inflicting on the Periyar Panthers. And as I said,
Periyar Panthers opened their account on the points per match with that one solitary win. So losing 3 out of 3 is going to be difficult for Tadoba Tigers and Periyar Panthers going forward in the summit round. But coming up at 8 p.m, it's going to be the table toughest. Muttal Magnets versus Kaziranga Rhinos. And as of now, signing off for this match, I was Navin Shaurya along with Radhika. Radhika, thank you so much. It was always very informative and exciting to share the commentary box with you. See you soon, everybody, at 8 p.m.
ओके सो गाइस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फेलिसिटेशन सेरेमनी की तरफ चलते हैं और आज हमारे साथ श्रीमान अमित गोयल सर यहाँ पर मौजूद है, डायरेक्टर ऑफ गुस्टोरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। सर आपका तहे दिल से स्वागत है। वेरी फाइन पर्सनैलिटी ऑफ जयपुर इज नाउ विद अस। सर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे साथ विकास गौतम सर मौजूद हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी है उसी तरह से हमेशा बनी रहे। तहे दिल से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस।
Have a blasting Sunday evening guys. स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का। पहुंच चुका है ये सफर मैच नंबर 110 पर, यानी कि एक और बड़ा मुकाबला अब लाइनअप में है। अब सभी को हम दिखाने जा रहे हैं मुरथल मैग्नेट्स वर्सेस काजीरंगा राइनोज। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। संडे इवनिंग निश्चित तौर पर आप सभी के लिए बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरपूर, बहुत ही जोश जज्बा जुनून से भरपूर, बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी नजर आएगी, बहुत सारी पॉजिटिव इंटेंट नजर आएगा। और चलिए डे नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चैलेंज राउंड पहला मुकाबला हम्पी हीरोज ने जीत प्राप्त की। दूसरे मुकाबले में अरावली एरोज ने यहाँ पर नॉब ऑन द एज था जहाँ पर जिस मुकाबले में वहां पर जीत प्राप्त की। और अभी तीसरा मुकाबला यही उम्मीद रखते हैं कि ये भी बहुत ही ज्यादा इंटेंटफुल मुकाबला होगा। मुरथल मैग्नेट्स वर्सेस काजीरंगा राइनोज के विरुद्ध एक बड़ा मुकाबला लाइनअप है। बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि अब बहुत ही जल्द इस मुकाबले के साथ हम आप सभी का जोश जज्बा और जुनून टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से अब सभी का हमने तहे दिल से स्वागत किया। और चलिए अब बहुत ही जल्द यहाँ पर समय होगा हमारी दोनों टीम्स को इनवाइट करने का। तो सबसे पहले हमारी टॉप ऑफ द टेबल जो टीम मौजूद है उन्हें बुला लेते हैं। लेट्स इनवाइट मुरथल मैग्नेट्स। और चलिए अब समय है हमारी राइनोज से परिपूर्ण टीम को बुला लेते हैं। काजीरंगा राइनोज। संडे फंडे में एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे। आज की संडे की इवनिंग बहुत ही ज्यादा जोश जज्बा और जुनून से भरपूर होगी आप सभी के लिए। और चलिए मुरथल मैग्नेट्स की स्टार्टिंग 7 के साथ वार्तालाप करना आरंभ कर देते हैं। आशु मलिक यहाँ पर मौजूद मिलेंगे आपको। सर्वप्रथम संजय और मनीष की वो कवर की कॉम्बिनेशन नजर आएगा। विनय, वीरेंद्र, उमेश पवार, इन्हें ऑलराउंडर कह लीजिए, इन्हें रेडर कह लीजिए और सो कॉल्ड डिफेंडर भी कह लीजिए। कृष्ण धुल और विजय कुमार ये प्रॉपर कॉर्नर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे एक बार फिर से अपने खेल को बलपूर्वक निभाने के लिए। परविंदर, जयदीप, राहुल, अंशुल और आर्यन हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ होंगे यहाँ पर सुपरस्टार नवीन। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। Oh, thank you so much, Arshit. And Kaziranga Rhinos, of course, the Dhakadness of Parthik Dhaya with 369 rate points. The topmost raider will be supported with a big change. It's not Sahil Kumar, it's going to be Mayank Soni who will be supporting Parthik Dhaya along with Manu. So that's a big change by Jagmal Singh. Let's see how that will work out. And still struggling with that left corner, Mohit Khaler should have a little settled down with Hitesh Kadian in the right corner there. And then the covers will be taken care by Rajneesh Narwal and Rohit Kumar. But still somewhere Kaziranga Rhinos have a little bit of advantage with Hitesh Kadian with 57 tackle points. But somewhere the left corner is still a bit of worry as Mohit Khaler is trying to find his feet. But they are up against the raiding trio of Muthal Magnets. But before that, let's see who's the men to watch out for. For me, definitely from the Muthal Magnets, it's going to be the big defender coming in from Krishan Dhul. There we go. The topmost defender of this series with a tackle strike rate of 51% and 96 tackles converted out of 180 points. So he's going to be up against the top raider of the Yuva Kabaddi series, the Dhakad Dhaya. So it's the match between the top raider and top defender, Arshit. जी हाँ बिल्कुल, आज आपको इनॉर्मस गेम देखने को मिलेगा इन दोनों के मध्य। देखिए 502 रेड्स यहाँ पर, 369 रेड पॉइंट्स, 21 सुपर 10 वहां पर आपको नजर आएंगे। और स्ट्राइक रेट की बात कर लीजिए 73.5। ये सच में एक अम्यूज कर देने वाले दृश्य हैं, अम्यूज कर देने वाले आंकड़े हैं और उतना ही शानदार ये इन दोनों का मुकाबला होगा। नवीन, very much on the cards, but the toss also won by Dhakad Dhaya. And he actually chose the opposite court. He said, I want the court where Manish Dhul is standing. And Manish Dhul obliging. And the performance of the teams, of course, is a big concern as we move along with that summit round.
just staring at us on Thursday, which is going to be the 30th of this month. So 19 matches won out of 24 and lost 4 matches with Murthal Magnets being on the top of the table of the challenger round. Will be really eyeing to finish top 1 or top 2, because if you finish top 1 and top 2, you will just play one match, and if you win in that qualifier 1, you will directly go to the finals. That is what top 1 and top 2 means. But being here with Kaziranga Rhinos and just making sure they are there, they will also be trying to finish at the top 2 tables with 13 points to them, Harshit. बिल्कुल वो यही चाहेंगे यहाँ पर कि वो भी उस तरह से आपको खेल का प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और निश्चित तौर पर जैसे जैसे मुकाबला आगे की तरफ चलेगा हम बात करेंगे समिट राउंड की। और चलिए हमारे सभी दर्शक चाहते हैं इस मुकाबले की बहुत ही जल्द शुरुआत की जाए काउंटडाउन के साथ। लेट्स बिगिन द मैच। Very, very important match as the top raider and the top defender will clash along, and the first raid will come from the raiding trio. Who is that going to be? The Amar Akbar Anthony or the Trimurtis of Murthal Magnet? It's going to be Umesh Pawar starting in the raid with 124 raid points, and Vinay Virender, Ashim Malik, Umesh Pawar all together have scored 515 raid points for Murthal Magnets in the Yuva Kabaddi series. Oh, that is massive. That is really massive. And this Murthal Magnets does not start with a starting 7. They start the match with a set 7. They are the best set 7 in the entire series. And there you see the top raider of Yuva Kabaddi series, Dhakkar Dhaya, comes in. जी हाँ, प्रतीक धाकड़ दैया, और बिल्कुल सही कहा आपने कि वो सेट 7 आपके लिए नजर आती है मुरथल मैग्नेट्स की। और चलिए प्रतीक धाकड़ दैया, उमेश पवार ने जरूर एक अनोखी शुरुआत करने चाहते थे, परंतु ये एक बड़ा टैकल है। क्या ये टैकल नंबर 97 होगा? राइट कॉर्नर कृष्ण दुल के लिए देखिए एक बार फिर से यहाँ पर चेन में धकेला, डुबकी जरूर लगाना चाहते थे विनय वीरेंद्र और कृष्ण दुल, सही समय पर लो रहकर नवीन, जिस तरह से हमने देखा कि बिल्कुल इंश्योर किया उन्होंने, लो रहे, लो चेन टैकल यहाँ पर किया, यानी कि क्या 1-0 के साथ कृष्ण दुल यहाँ पर लीड करेंगे प्रतीक धैया के विरुद्ध इस मुकाबले में। Yeah, we teamed it up as the top raider versus the top defender this match. That was what the count was. Yeah, we'll have to have an eye on that as well. So currently advantage with the top defender, and Ashir Malik goes in deep, gets his running hand touch on the right flank. We'll have to see whether it is the right corner or the right in. Goes in deep, touches the right in. Wow, that is some stretch. That is really well done. And he has sent away the very, very important support raid that will be coming in from Mayank Saini. So why did Mayank Saini come in instead of Sahil Kumar? Sahil Kumar was doing well as Manu comes in and attacks the left cover. Manish Dul has to go out. Left raider getting his first point. But any idea behind Sahil Kumar not featuring today is a matter of concern. जी हाँ, बिल्कुल आज बिल्कुल आपने सही कहा कि साहिल कुमार अच्छा कार्य कर रहे थे। क्या कहीं पे हल्का सा निगल है, क्या हल्की सी इंजरी वहां पर है, जरूर हम देखना चाहेंगे। सब्स्टिट्यूट में नाम जरूर है उनका साहिल कुमार, जिन्होंने 97 रेड पॉइंट्स लेकर आए। इस बार डैश करने का प्रयास था, नंबर 22 ने यहाँ पर कोशिश की थी, लो जरूर रहे थे, परंतु ये इनकी तेजी है, ये इनकी स्पीड है। विनय वीरेंद्र देखिए जिस रफ्तार के साथ, हालांकि बहुत सही अंदाज में यहाँ पर नवीन आपसे जानेंगे कि इस तरह से इस डैश में आपने देखा। Yeah, see what happened was Rohit Kumar, see always I say, he has to remember that he is the cover. He is the cover. See, somewhere you'll have to fire when the tackle is initiated by the corner. So the tackle wasn't initiated, and even Vinay Virender did not even go to the bonus. But look at this, the speed of Partidaya getting Sanjay Dul. Only one small weak link is Sanjay Dul in that defense, because he always gets out by not going back in time. His high line defense is nice, but being the right cover, you'll have to go back also in the right time. So just talking about Rohit Kumar, as a cover you need to understand, you need to go for the dash only when your corner is initiated dark, or else it's not your cup of tea. Look at this! Oh, this is the top raid by Vinay Virender.
Left raider, Hitesh Kadyan actually went in for the ankle hold and it's a super raid. The covers came in at the right time. The idea was right, execution even better, but Vinay Virender actually making sure the covers did not get the better of them. You know why, Harshit? Because the cover was not low enough and Vinay Virender could slide below the dash of the cover into the midline. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार सोच जरूर अच्छी थी, परंतु उस तरह से एग्जीक्यूट यहाँ पर कवर के खिलाड़ी कर नहीं पाए। अब एग्जीक्यूट करना चाहेंगे अपने सारे इरादों को। प्रतीक ढाकड़ भैया, जिस तरह से आपने नाम दिया है नवीन, क्या बात है, बहुत ही ओ, परंतु इस बार क्या 2-0 है नवीन? विल आई काउंट दैट 2-0? It is 2-0. It is 2-0, and he's getting very close to that 100 tackle points. 98 for Krishan Dhul. Look at that double tie hold, and Partik did not even realize that he's got stuck with both the thighs against Krishan Dhul, and suddenly only 2 on the board, and it's going to be an all-out for sure as the right corner could not maintain himself inside the end line, and it is a very quick all-out on Kaziranga Rhinos. Murthal Magnets have got an easy point. Just look at that, unbelievable. What I think it was Sahil Kumar who came in. I think it was Sahil Kumar who was substituted in, Harshit, isn't it? He was substituted in for a raid that used to come after that raid from Ashu Malik. But then he could not stay inside. बिल्कुल वहां पर जिस तरह से करना चाहते थे अपना कार्य, आप इस बार विनय वीरेंद्र, ये देखिए मैंने इसलिए जब स्टार्टिंग 7 की बात कर रहा था तो मैंने कहा था आप इन्हें रेडर कह लीजिए, आप इन्हें ऑलराउंडर कह लीजिए, या फिर आप इन्हें सो कॉल्ड डिफेंडर भी कह लीजिए, इन पोजीशन से वो सरप्राइज करते हुए दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार से आज वो संडे हम सरप्राइजेस की बात करते हैं, जरूर अंकित सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस को मिस कर रहे हैं, इंजरी होने के चलते वो दिख नहीं पा रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से आज चाहे हमने रोहित राघव की बात की, चाहे विनय वीरेंद्र को हम देख रहे हैं, वो सरप्राइजेस अब इन पोजीशन से जो हमने लगातार बात की थी कई दफे नवीन, वो अब आपको डिफेंडर्स की तरफ से नजर आ रहा है। I told you, Yuva Kabaddi series has given a big importance for that in position. All the franchises, may it be whoever it is, all the big franchises will definitely make sure they train their in position raiders to be proper defenders, and it is lot of scientific knowledge that goes into that, okay, because you just can't have some raider going in for some defender. It has to be a right raider, and then the right end will come into play. Once again, Sanjay Dull is a little weak connect in that Murthal Magnets' defense. So that is what Partik Daya is going to take advantage of. That is 2-0 on Sanjay Dull, but Krishan Dhull has got 2-0 on Partik Daya. But yeah, so listen, see what happened there. It is Sahil Kumar once again makes his way inside. Okay, so that is what we saw in the previous raid when Ashu Malik got the all-out on Kaziranga Rhinos. Sahil Kumar was inducted from the bench, from the substitute bench, but then he could not deliver. But yeah, talking about Vinay Virender being in that right in position, Partik Daya is a right raider. So only then you can be in a right in position. If say for example Manu is raiding or even Sahil Kumar is raiding, you will not see Vinay Virender in the right in position. You will probably go to the left in because he is a left raider, Sahil Kumar. So that has to be really thought of very nicely. So that is the trick. That is the trick that teams should really come up with. जी हाँ, बिल्कुल बहुत सही तरीके से समझा भी है, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, पर ये देखिए नवीन क्या बोलने वाले हैं कि लेट अस टॉक। Oh, absolutely. Krishan Dhull, I understand the Josh and the Jasba, but the running hand touch, look at that. Did he get it? Oh, it feels really away. Partik Daya was not swearing. Krishan Dhull immediately started swearing on the mat, saying, "Red out!" There we go. Oh my God. Top raider, top defender. This is what you can get. The best of both the worlds. And Krishan Dhull was immediately swearing on the mat because Partik Daya could not control his speed. He went into the lobby. He was completely opposing that, saying that I touched Krishan Dhull but did not get it. Ashu Malik in a do-or-die raid now. जी हाँ, एक डू और डाई रेड है। आशु अद्भुत मलिक किस तरह से यहाँ पर क्या, ये देखिए रजनीश नरवाल इस बार डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया,
प्रेशर बल्कि रेडर पर था, परंतु इस बार रजनीश नरवाल एक छोटी सी गलती करते हुए नजर आएंगे। देखिए पॉक लाइन से कितना आगे था, निश्चित तौर पर डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया, परंतु इस बार पूरी तरह से विफल रहे अपने उस कार्य में। और जरूर अब काजीरंगा राइनोज शुरुआती मिनटों में, अक्सर हमने इनके शुरुआती 2 मुकाबलों में देखे नवीन की, अक्सर प्रतीक दहिया जाते हैं कुछ सुपर रेट्स आपको शुरुआती 10 मिनटों में नजर आती है। ये साहिल जिनका आप इंक्लूजन जा रहे थे स्टार्टिंग 7 में, वो इस बार देखने को मिलेगा और एक शानदार पॉइंट यहाँ पर लेकर आएंगे। जो गलती रजनीश ने की थी वो इस बार यहाँ पर क्या संजय करते हुए नजर आएंगे। जी नहीं, मनीष दुल थे इस बार, राइट लेग को होल्ड करने का प्रयास किया, आसानी के साथ वहां पर छुड़वाया और साथ ही साथ एक पॉइंट लेकर गए काजीरंगा राइनोज के लिए। This is why I wanted Sahil Kumar to start. Correction, so I was just expecting Sahil Kumar to be the left raider, but I guess Manu is there in the left raider's position, number 8 for Kaziranga Rhinos. But yeah, see, this is Vinay Virendra on a left raider position. And then look at that! Oh, my God! Mohit Kalar just stood like a wall in front of Vinay Virendra. He did not go back. He did not get retrieved in time. He just left the chain, stood there for the block, and then the support came in. So that was more of a tactical point for Mohit Kalar. He thought on his foot and did not go back, and sometimes not going back also pays way, but you should not be half-hearted. Should I go back? Should I stay there? मैं मतलब रोज दूं ना दूं, ये सब मतलब बीच का रास्ता नहीं है। इधर रोज दे दीजिए, मत दीजिए। And a strong double tie hold. Sanjay Dhul takes a point against Pratik Daya now. So, नवीन कितना काउंट करना पड़ेगा ना, हमें देखिए 2-1 अब संजय धुल ने कर लिया है, 2-0 वहां पर कृष्ण धुल के विरुद्ध चल रही है। तो मुझे लगता है कि शायद हमें हमारे कमेंटेटर नवनीत की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बड़े स्ट्रांग रहते हैं मैच में। पर चलिए जोक से बात फिर से चलते हैं। आशु अद्भुत मलिक, जिस तरह से ये अद्भुत मैं इनके बीच में इसलिए लगा रहा हूँ वहां पर नवीन, क्योंकि कितने काम कंपोज रहते हुए नजर आते हैं, कभी भी इनके चेहरे पर शिकंज आपको नजर नहीं आती है, और बड़ी आसानी के साथ डिफेंडर्स अक्सर इनके विरुद्ध थोड़ा सा इन्हें अंडररेट करते हुए नजर आते हैं कि चलिए मैं इन्हें पकड़ लूंगा, परंतु जिस स्किल्स के साथ एक बार फिर से देखिए सिर्फ बोनस का प्रयास किया, जिस तरह से अपने लेग को, एंकल को आसानी के साथ स्टिच कराया, थोड़ा सा वहां पर झटका सा दिया और आसानी के साथ यहां पर मिड लाइन को क्रॉस किया। ये देखकर आशु मलिक की जो कंपोजनेस है, जो टेम्परामेंट उनका नजर आता है, देखिए कहने को ये बात बिल्कुल सही कि बहुत ज्यादा परिस्थितियां उनकी विपरीत नहीं गई है, परंतु उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को ढाल रखा है वो सच में काबिल तारीफ है। और अब साहिल भी इसी तरह के प्रदर्शन की आप उम्मीद रखते हैं, परंतु कृष्ण धुल वहां पर मौजूद है। नवीन, क्या 99वां टैकल है कृष्ण धुल के लिए? 99th, yes, for sure. Look at that strong block against Sahil Kumar. Left the chain, so that is very important. He left the chain, left Vinay Virendra to go back alone and stood for the block. And 99 for a defender is a very, very big number. And another tackle point will make him the first man on earth in Yuva Kabaddi series to reach 100 tackle points. And Animation Pawar has cleaned up Kaziranga Rhinos. My God, it was a skill exhibited. Oh my God, that's a sixer. Oh my God, that's definitely a super raid. 4 points, 4 touch points, and 2 for the all-out. Look at that. First, the hand touch, jump towards the lobby, then the turn, goes back, backtracking skills, puts the dangling hand out, and crosses the midline. Unbelievable. I think this is happened on a very, very rare occasion that we have seen a sixer in Kabaddi. There we go. And Kaziranga Rhinos, just before the previous all-out, they were, I think, just 2 or 3 on the board. And now, after the second all-out, they're just 5 on the board. My God, this is massive. This is a massive, massive lead. And Pratik Daya is still not got one against Krishan Dhul. बिल्कुल, उमेश पवार जिस तरह से अनस्टॉपेबल प्रदर्शन कर रहे हैं। ओ संजय धुल कह रहे हैं चलिए सिर्फ कृष्ण धुल में दम कम नहीं है, थोड़ा सा आप चर्चा विमर्श कर लीजिए संजय धुल के बारे में। क्या लाजवाब पावरफुल डबल थाई होल्ड, देखिए क्या पोटेंसी यहाँ पर आपको नजर आती है जब इस प्रकार से डबल थाई होल्ड करते हैं और फिर से इस आंकड़े को बराबर करते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार, ताकतवर, बलश्रेष्ठ यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वहां पर संजय धुल। और जी हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि टॉप 10 डिफेंडर्स में उनका भी नाम शुमार है। संजय धुल के अक्सर जब हम बात करते हैं ना, देखिए अक्सर उनके लिए दिन या तो ऑफ कलर होते हैं या फिर इन कलर होते हैं, परंतु विनय वीरेंद्र अक्सर आपको ऑफ कलर नजर नहीं आते हैं। हितेश का ध्यान अभी तक नजर आ रहे हैं।
That was a very weak tackle. Hitesh Kadian shouldn't have gone for that diving ankle hold if he is not sure. And in the meantime, he's also got Rohit Kumar along with him on the bench. So somewhere Vinay Virendra has been very, very effective in those raid points. And now Manu. See, when Manu is there, oh, that's a good turn. That's a really good turn towards the lobby and gets 2 points. And he stops the left cover in the ranks. Look at that. Strong block wanted to come from Manish Dhul. Anti-block. Turned towards the lobby and to the midline. Really well done by Manu. See, when Manu was raiding, Vinay Virendra was not in the left-in position. Harshit, this is what all the franchises should understand. If they want to have... Oh, somebody has stepped in the... Right. Something happening there. Substitution. Right. There should have been a substitution before the raid. Is it? Or no. The retrieving skills. Who's going to be retrieved from the bench? The order of retrieval is what was the confusion in Hitesh Kadian. Yeah, technical point for Muttal Magnus. Yeah, there we go. Fantastic. Yeah, because the retrieval was wrong. It is in the order of you going out. If Hitesh Kadian goes out first, he has to come in first. Not Rohit Kumar. Rohit Kumar went after Hitesh Kadian. Because in that raid, if you remember, when Vinay Virendra was raiding, the first touch point was by Hitesh Kadian and then it was Rohit Kumar. So somewhere Rohit Kumar coming in into the lobby or rather into the court, the coach should have really taken care of that. And Ashim Ali goes back with a very, very simple point. So it depends on the coach and depends on, of course, the referees. I guess I somewhere get confused here, Arshit. Is the reviving skills or the control under the coach or under the referee? बिल्कुल आपने सही प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि किस तरह से यहाँ पर जो वो रिट्रीवल अगर आपको देखने को मिला कि जब रिवाइवल एक बार फिर से खिलाड़ी होके हुए आया तो क्या ये रेफरी के अंडर आपको नजर आता है या फिर कोच के अंडर आपको नजर आता है। परंतु चलिए इस विषय पर और वहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जरूर। अभी देखिए एक बहुत बड़ी लीड नजर आएगी आपको मुर्तल मैग्नेट्स के पास। यस नवीन, आपसे और सुनना चाहेंगे इस विषय में। Yeah, see, when it is not the coach, or rather the coach is sitting there with the referee next to him. Yeah, the coach Saab, if you see the hoardings there, the advertising hoardings next to fan code, it's written coach Saab there and the coach is sitting there in the right place. So if it is controlled by the referee, how can the referee give away a technical point to the opposition? No, it is not the coach's fault. I'm sorry, my dear respected referees. The 1 point has to be given back. It has to be given back to, or rather taken back from Murtal Magnet. So ideally it is 29, now 30. Now 30 on Murtal Magnets for the tackle and 7 to Kaziranga Rhinos. बिल्कुल आपने सही कहा पर कि देखिए अगर वहां पर रेफरी मौजूद थे, अगर इसी के चलते अगर देखिए इसी कारणवश अगर वहां पर वो एक टेक्निकल पॉइंट एक्स्ट्रा वहां पर मुर्तल मैग्नेट्स को मिला है तो जरूर एक चिंता और एक चर्चाजनक विषय बनेगा कि वो टेक्निकल पॉइंट किस लिहाज से वहां पर मुर्तल मैग्नेट्स को दिया गया था, अगर उसी लिहाज से अगर उसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गया था। क्योंकि अगर रेफरी वहां पर मौजूद हैं और उनके होते हुए अगर और कोई खिलाड़ी अगर पहले चले जाए तो निश्चित तौर पर आप उन्हें बेहतर करना चाहेंगे। परंतु चलिए यहाँ पर बेहतर करने की आवश्यकता होगी काजीरंगा राइनोज के डिफेंस को। और प्रतीक धाकर भैया आपको इस तरह से देखना होगा कि आपको मैट पर रहना कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से डिफेंस में आप पॉइंट्स अपना नहीं गंवाना चाहेंगे। Yes, I saw that in the previous match also when Ashish Narwal was not getting raid points. He was going against Bhim Bhagwan. You know, he was going against Jai Bhagwan and putting in a lot of tackles. And that is somewhere the top raiders should also understand that every day is not Sunday for you. I understand there will be some tough days, even on Sundays, as today is a Sunday, right? So you have to understand that you don't have to go in for a tackle. And Ashim Malik now once again reduces Kaziranga Rhinos to just one man standing. Look at that. He went in very swiftly with the pursuit. Then Rajneesh Narwal went in for the double ankle hold. Why do you have to do that? Why are you so hasty in that decision coming in? So it's Murtal Magnets 32 and Kaziranga Rhinos 8. I am going to count down that 1 point because see, I understand it's a big lead. What if
What if the lead is bigger? And number 100 for Krishan Dhul on the diving ankle hold on Manu. Take that into the history books. Take that into a lot of data recording. Take that on etched on stone, etched in golden letters for Krishan Dhul. First man to reach 100 tackle points in Yuva Kabaddi series is that man. Right corner, Murthal Magnets, Krishan Dhul. क्या अद्भुत खेल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको कृष्ण धुल। निश्चित तौर पर एक और बहुत ही लाजवाब वहां पर टैकल नजर आया। और अब उमेश अनस्टॉपेबल पवार एक बार फिर से राइट हेड के साथ शुरुआत करते हैं। और देखिए हमने इन्हें थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है, सेम एनर्जी ये परस्यू करते हैं। नवीन काफी गौर से आप इन्हें देखते हैं नजर आते हैं, जिस तरह से मुर्तल मैग्नेट से बहुत सारे मुकाबले अपने साथ में कमेंटेट किया है, परंतु जिस तरह से इन तीनों रेडर्स की वो जो स्किल्स है, देखिए हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट में होनी बहुत आवश्यक है, परंतु जिस तरह से इन तीनों ही रेडर्स ने वो अपनी एनर्जी बनाई रखी है, वो इंटेंट बनाए रखा है। और इस बार क्या ये पॉइंट मनीष धुल, संजय धुल या फिर यहाँ पर पूरी तरह से प्रयास किया है मनु थे। जी हाँ, बिल्कुल देखना होगा। Yeah, I think the defender crossed the midline. I think the defender crossed the midline. There you go. There you see. Manish Dhul actually going across the midline, and then the support staff coming in and saving him. So each 1 point, right? Because Manish Dhul went away across the lobby. Luckily, he did not cross the midline. If he had crossed the midline, I guess there would have been more points along with the raider going out. So somewhere Manu's raid has fetched Kaziranga Rhinos 1 point, and Ashu Malik raiding in, and it's nice to see that the tackle, or rather the ideology behind the tackle from Manish Dhul was to deflate the confidence of Manu, because Pratik Daya is struggling, so only Manu is bringing in points. So somewhere if you nab him down, it's going to be really good, and this I like this. Because Dakar Daya understood that he is not in the best of the form in the first half. He did not go in and raid after the third all out, right? After the third all out, he did not go in and raid at all. So that's the half ended. 36 for Murthal Magnets, 10 for Kaziranga Rhinos. 1 technical point of course will be corrected, no doubt. Okay. So what Pratik Daya did very cleverly, Harshit, is he did not go in and raid. He wanted to start fresh in the second half. So he sent in Manu, he sent in Sahil Kumar for 2 raids, and then keeping himself fresh for second half. I like that sort of thinking, because if it is not going your way, you at least stand on the mat. That's enough. बिल्कुल आपने सही कहा, परंतु चलिए उस बारे में आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। हाईलाइट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह का सफर रहा है, अक्सर हम काजीरंगा राइनोज को शुरुआत में देखते हैं वो एक ताकत प्रदर्शन करता है, इस तरह का ताकत प्रदर्शन वो अभी तक आपको नजर नहीं आया है। विनय वीरेंद्र की रेड, जिस तरह की स्फूर्त का उन्होंने प्रदर्शन तारीफ है, डिफेंस में लाजवाब प्रदर्शन किया। कृष्ण धुल ने इतिहास के पन्नों को पलटा है और अपना नाम उस क्रम में दर्ज कराया है पहली दफे। जब आप सक्सेसफुल डिफेंडर्स की बात करेंगे, सबसे पहला नाम कृष्ण धुल का लेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन, और ये है वो रेड, ये है वो चमत्कारिक रेड, ये है वो अम्यूजिंग रेड जो आप देखना चाहते हैं। 6 पॉइंटर शानदार रेड थी, और उसके बाद से लगातार विनय वीरेंद्र और उमेश पवार, आशु मलिक को कुछ पॉइंट मनु को जरूर मिले, परंतु पूरी तरह से यहाँ पर बैक होता हुआ नजर आया है काजीरंगा राइनोज। Definitely, where the first half ended, it was all Krishan Dhul, and today with 4 tackle points to his name, he's become the first man ever on earth to score 100 tackle points in a series in Yuva Kabaddi series. Look at that, 9 tackle points tells you the story, and the raid points is 8 into I think more than 2, I should say, for Murthal Magnets. Right, we'll just put a short break, and we'll come back to see if the Rhinos can make a big comeback in the next 20 minutes.
और चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मैच नंबर 110 मुरथल मैग्नेट्स वर्सेस काजीरंगा राइनोज। समय आ चुका है अब सेकंड हाफ की शुरुआत का और चलिए सेकंड हाफ की बात करेंगे। उससे पहले बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को कि यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स के पास एक बहुत बड़ी लीड वहाँ पर मौजूद है और इसी लीड को यहाँ पर कम करने के एक नए जोश जज्बा और जुनून के साथ स्कोरबोर्ड प्रेशर को भूलना चाहेगा यहाँ पर प्रतीक दैया और उनका पूरा टीम। और ये देखकर अच्छा लग रहा है। नवीन मेरे साथ मौजूद होंगे कमेंट्री बॉक्स में। नवीन देखिए बिल्कुल आपका सही कहना था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहेंगे प्रतीक दैया कोर्ट पार। इस बार वो उनमें क्या तेजी प्रतीक में नजर नहीं आ रही है नवीन आपको भी? He was very quick. He was very quick. The timing of Sanjay Dhul was off. Okay, and Pratik Daya was very quick to do the squat dubki. That squat dubki should have come in a little more later. It was very early for him. So somewhere there is error in the timing. It is really important in all the sport. The timing is very important. But Umesh Pawar, what a time that he has come in as the third raider of Murthal Magnets. We just speak about second raider, support raider, and what do you have to say about Umesh Pawar, the third raider, because Vinay Virender was there with Ashu Malik and getting in a lot of raid points, and Umesh Pawar, and see how much of I think the strategies, I should say. I guess, see, there are top people coming and watching this match as well. And what did Manish Dhul do? He just gifted a point to Kaziranga Rhinos, Sahil Kumar, and says, okay, let me take a little break on the bench. The captain of Murthal Magnets. But yeah, see, many dignitaries, many guests, many esteemed Kabaddi giants coming and watching this match. There is a lot of strategies to take out from Yuva Kabaddi series. It's not just that, we have good talents giving away. Of course, that's the first point. Talents, of course, will be given away. A lot of talent scouting will happen. A lot of players will get the chance to play for big franchises. And of course, the team India colors will be worn by them. As once again, right cover, Rajneesh Narwal has to go back in that attack from Ashu Malik. But what it has also done is, Harshit, it has given two big strategies for the world. The in-position defenders, or rather the raiders, turning into strong defenders, and in-position's effect of not just ankle holds. See, that is old Kabaddi. That is old Kabaddi of in-positions doing a tackle just for ankle holds. But the new age Kabaddi with Yuva Kabaddi series has shown that it is strong tie holds against the run of the raider coming in for the running hand touch. So that started off with Sultan of Surprises. Then now Vinay Virender is doing it really well for the Murthal Magnets, and that is one strategy. And the other strategy is third raider, Umesh Pawar. Come on, look at that! Look at that! I still remember when Pradeep Narwal was struggling, it was Monu Gayat who came in to the scene for the Patna franchise when we started, and he saved Pradeep Narwal like anything, and Monu Gayat became a big hero. There was no concept of a third raider, and I guess even now in the 8th season that we saw, the third raider concept is not so strong as the Murthal Magnets, Harshit. The world has to understand that very quickly. बिल्कुल आपने सही कहा वहाँ पर नवीन। और देखिए जिस तरह से ये ट्रायो नजर आ रहा है, और शायद इसमें कहना गलत नहीं होगा नवीन कि इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन मेन रेडर है मुरथल मैग्नेट्स का और कौन थर्ड रेडर है। जिस तरह का प्रदर्शन तीनों रेडर अपनी टीम के लिए करते नजर आ रहे हैं और लगातार देखिए स्विच करते हैं यहाँ पर तीनों रेडर्स अपने आप में, यानी कि एक बहुत बड़ी वार्ती यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से तीनों रेडर्स अपने आप को समझते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को समझते हैं कि कब किसका जाना ज़्यादा बहुमूल्य हो सकता है, कितना वहाँ पर वो जाकर डिफेंस में डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। और बॉन्डिंग बहुत अच्छी नजर आ रही तीनों में। Yeah. See, I generally try to compare something with food because I'm a big foodie, but I tend to control all the eating habits for the fitness that is required. So somewhere I can at least talk about food. See, I'll tell you something. They are, if you have to compare their variety, okay, they are like 3 different biryanis, okay. And Sahil Kumar asks for a point, he gets it, and the dash was not right. So 1 point for Sahil Kumar, somewhere giving Sanjay Dhul. Once again, look at that.
crosses the midline inside the lobby. Sanjay Dul dash was not strong because it was not low, but they will decide on that. They will talk about it and decide on that. And I will talk about the biryani comparison just after this, because three different raiders, three different tastes of biryani. Oh, they are going for the review. Harshit, what do you think? देखिए ऐसा लगा कि वहाँ पर क्या साहिल लॉबी में कहीं कनेक्शन था अगर तो निश्चित तौर पर साहिल वहाँ पर कुछ पॉइंट लेकर जाएंगे। देखिए बहुत ही बारीकियत से यहाँ पर रिव्यू में जब वीडियो चलता नजर आता है, देखिए क्या वहाँ पर कोई कनेक्शन था, क्या लगा नवीन आपको, क्या कोई कनेक्शन था उस समय लॉबी से साहिल का? I feel that his left leg is still inside the lobby, but Sanjay Dul is trying to pray and say, okay, my dash should have been a little more to the lower end of Sahil. Instead of the body, it should have been near the waist or thighs. And the support also did not come for Sanjay Dul in time. But this is going to be tricky. This is really going to be tricky, because we'll have to see if the left leg of Sanjay Dul was inside the lobby. In fact, Sahil was inside the lobby. If Sahil's left leg is inside the lobby, then it is safe to say that somewhere Sahil is safe. But from the angle that we actually got in, it looked like he was pushed and he was trying to reach the midline from outside the lobby. But it depends on his left leg. It completely depends on Sahil's left leg if it is still inside the lobby. The decision coming. Raider out. There we go. So the left leg was not there inside the lobby. It was completely pushed out. Let's have that confirmation once again. Look at that. Completely gushed out from the lobby and then tried to reach the lobby from outside the reach the midline from outside the lobby there. Right. So just talking about three different biryanis as three different raiders. They have different styles, Harshit. Umesh Pawar's style is different and Ashu Malik's style is different. Vinay Virender to completely different, is a left raider. Okay. I will talk about their styles, just giving that names of a little bit of biryani as once again a running hand touch comes in. So there is one biryani called Ambur biryani in Tamil Nadu. It's very famous. It is more of the tomato flavor with the chicken mixed in and with the mutton and all that. Of course, mutton chicken biryani is something different. There's something called Ambur biryani. Okay. There's one called Dindikal biryani. Okay. That's from a district called Dindikal. Okay. So it is an authentic taste in itself. It is completely different. It's Dindikal Talpakatti biryani. So it has more of spices. It has more of long and adrak, long. Everything is mixed across. And this is a strong tie hold against Dakardaya. Let me not talk about Kartik's unsuccessfulness today. Let us talk about biryani, Harshit. I guess you will be interested in that more. Yeah. and then there is so Ambur biryani. And there is something called Dindikal Talpakatti biryani that both are from Tamil Nadu. And of course you would have heard about something called Donne biryani in Karnataka, which is very famous. It is served in a leaf bowl, and it is more mixed with greens. It is more mixed with dhania, pudina, and it is green in color. And there is one more very, very favorite biryani of everybody, which I will give it to Krishan Dhul, is the Hyderabadi biryani. Okay. So Murthil magnets have got a lot of variety in them, and every biryani is lovely to taste. So this is the best variety I can come up with. क्या बात है Why not नवीन? देखिए आप कौन सी ऑर्डर करने वाले हैं आज? देखिए संडे भी है, फंडे भी है, और मुझे लग रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर भी करते हुए नजर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 100% because Krishan Dhul got those 100 tackle points, and it is going to be Hyderabadi biryani for me, because it's really impressive. You can eat it any time in a day, and of course any biryani you can eat it any time in a day, but today especially for Krishan Dhul. Let's see what did Manu do. Did he go for the toe touch? Did he get Krishan Dhul's legs? Oh, there we go. Immediately he appealed, but I do not think he's got any points for that appeal. Yeah, Krishan Dhul, very, very prominent and very loyal as always, and that is how Hyderabadi biryani is. Anybody can prepare it, not just in Hyderabad. It can be prepared by anybody. It's a very simple recipe, simple menu, and it is also loyal to its taste, like Krishan Dhul. बिल्कुल। और नवीन देखिए एक पर्सनल एडवाइस है, थोड़ा सा गेम से हट कर है, व्हाई नॉट यू आल्सो ट्राई फूड ब्लॉगिंग ब्रो?
you'll only see me eating. You'll not see me explaining things. संजय दुल लगातार कह रहे हैं कि चलिए ये ताकत का परिचय दे रहे हैं और जिस अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं देखकर अच्छा लग रहा है। देखिए नवीन, जिस तरह से संजय दुल के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी सर्वाइवल राउंड में इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आया था। बूस्टर राउंड में जैसे जैसे पूरी टीम सेटल होती चली गई, मनीष दुल का अच्छा वहां पर सपोर्ट मिलने लगा, तब से संजय दुल यहाँ पर थोड़े से एक, जिस तरह से हीरो की बात करते हैं तो एक ऐसे हीरो के तौर पर उभर कर आए हैं और टॉप 10 डिफेंडर्स ऑफ युवा कबड्डी सीरीज में उनका भी नाम वहां पर शुमार है। बहुत अच्छे टैकल्स उन्होंने भी किए हैं अपनी टीम के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट कड़ी बन रहे हैं अब संजय दुल। आपके क्या विचार हैं उनके बारे में? When you have so many biryani varieties there, you'll need raita, right? You'll also need the raita. So Sanjay Dul is that raita where it's very important in that cover defense. देखिए, मैं आपका प्रमोशन करूंगा अगर आप फूड ब्लॉगिंग चालू करेंगे तो। सोशल मीडिया प्रमोशन की जिम्मेदारी मेरी है, आप प्लीज शुरू कीजिए, हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमाने वाले हैं। So sweet. लेकिन कमा रहे हैं राइट कॉर्नर से फिर से एक बार कृष्ण दुल। Look at that, 101 tackle point and a high five for today to celebrate with a lovely ball of Hyderabadi biryani and also the support coming in from the raita of Sanjay Dhul. That is the combination that we want, isn't it? Hyderabadi biryani along with the raita. But coming back to Kabaddi, Murthal Magnets have touched the half century mark in this game and I do not see Kaziranga Rhinos somewhere trying to make a comeback. But as I always do, Harshit, I will talk about the team which is lagging behind. 13 points to 50. I know it is a very, very big difference. But even then, 11 minutes left in the game is enough to at least put a fight back. At least to put Murthal Magnets into the all-out at least once. What should Partik Daya do? I will really tell this. He has to go and attack the left corner because Mohit Kalar is not so confident as when you compare with Krishan Dul. In fact, correction, Vijay Kumar is not so confident, and that's what he did. That is what he did. As I was talking, he attacked the left corner. Vijay Kumar is not so confident like Krishan Dul. He went in for the kick. Sanjay Dul came in. He turned the comic page and then left corner, both covers sorted out. Super raid. I guess, or was it only 2 points? जी वहां पर देखना हो कितने पॉइंट्स वहां पर अच्छी तरह से प्रतीक ने प्राप्त किए। और नवीन, मैं जब हाफ टाइम के समय बात कर रहा था कि हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो मैं यही चर्चा करना चाह रहा था कि प्रतीक दहिया अगर मैट पर मौजूद हो, अब बिल्कुल सही कहना था नवीन आपको कि मैट पर खड़े रहना चाहते हैं, कुछ समय देखना चाहते हैं किस तरह से उनके साथी रेडर्स जा रहे हैं और क्या वो कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं इस खिलाड़ी को निरंतर रेड्स करने देखना चाहता हूं क्योंकि जो गैप था उस समय पर वो महज एक ही खिलाड़ी यहाँ पर काजीरंगा राइनोस के लिए पूरा कर सकता था, वो था प्रतीक दहिया। और जिस तरह से उनके पास सुपर एज लगाने की क्षमता है, देखिए इस युवा कबड्डी सीरीज में उन्होंने 10 के आसपास वहां पर सुपर एज लगाई, आयोग की 10 से ज्यादा सुपर एज उन्होंने लगाई है। और उनके पास जब वो क्षमता है, जब वो उनके पास बल श्रेष्ठता है, तो क्यों आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेड करते हुए नहीं देख रहे? क्या होगा? एक और पॉइंट यहाँ पर भी देखिए, अगर काजीरंगा राइनोस के लिए प्रतीक दहिया जाते तो मुरथल मैग्नेट्स को 1 पॉइंट मिलता, वो हो सकता है, परंतु अब यहाँ से उन्हें मोमेंटम जो चाहिए, जो उमेश पवार के पास है, बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम मैं प्रतीक दहिया में देखना चाहूंगा नवीन। A very good point. But I'll tell you something. Yeah, your angle may be right, but I will just give you one big example of the man who always changes the phase of the game only by his presence. Okay, it is of course the biggest Captain Cool, Mahendra Singh Dhoni, and we call him Tala in Tamil. He's called Tala Dhoni. Tala is the leader of the pack always. Okay, so look at that Dubki and crosses the midline. Did he cross it or did he touch it? Bakar Daya coming into his own. Dubki was there. He touched the midline, did not cross it. Right time the Dubki came in. Inches from the midline. But let me tell you, why did I take Dhoni's name? Because I know it will be difficult. See, when you have to get, somewhere 100 runs in 5 overs, or I'm just giving you hypothetical figures. I mean, I'm just giving you figures where you can just imagine. Yeah, okay. Ashu Malik jumps and is being tackled down. Right, nice. Okay, so if you have to get some 40 odd runs in the last 3 overs, and what is going to happen?
if Mahendra Singh Dhoni is there, of course the whole Janta, the whole nation will be hoping something that will happen. But more than that, you know what will happen? The opposition bowlers will start to panic, even if it is 45 runs in last 3 overs. Let me tell you, and look at this super raid. This is what we want for Kaziranga Rhinos. This is what is coming in from Manu. Left raider goes in under the chain and weak left flank. Vijay Kumar and along with the chain was Vinay Virendra. So now see, only 3 men left on court. Why? Why? Because Pardeep Daya is present on the mat. That's all is required. See, I understand when you say you have to go in for all the raids. I understand that. But the opposition also has to panic, right? They'll also have to think something else. So whether you win it on the last ball, whether you go ahead and see if you can score, 19 runs of the last over or 18 runs of the last over when Dhoni is there, that is something else. The result can be something else. But you have that belief, isn't it? As a viewer, you have the belief that something will happen. Super tackle with a solo tackle for Sanjay Dull. Wow! Fabulous to watch out. Fabulous to watch out. What a super tackle. क्या शानदार वहां पर देखिए डाइव करते हुए नजर आएंगे आपको. डाइव किया और उन्हीं की तरफ यहां पर बहुत सही अंदाज में. और ग्रिप देखिए नवीन, हमेशा हम ग्रिप की बात करते हैं, ग्रिप बहुत शानदार था. और मैं चाहूंगा नवीन की जो इस पॉइंट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उस पॉइंट को एक बार फिर से हम आगे लेकर जाते हैं. जी आपने बात कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की. यस Definitely, yeah. Thanks that we just need to make people understand watching on fan court live about this situation where Dhoni is there. See, there are 3 things that will happen. One, people watching will be believing that something will happen. Something will happen. See, that is life, isn't it? We'll have to believe something good will happen. That is sports, and that is kabaddi. It is so close to life. And point number 2, what will happen as a home team? Whether he is playing for the Chennai franchisee or whether he is playing for India, both the teams will expect, okay, something is good going to happen. Something good is going to happen if Dhoni is around. And the third most important point, the opposition will panic. Even if it is 19 runs in the last over, even if you are bringing the topmost bowler of the world, he will panic if Dhoni is there. So that is what is important. That is what I mean to say. You need to stay in and take the match deep with Pardeep Daya being on the mat. It's a very hypothetical situation of comparison. It's a very easy point in a do or die raid against Hitesh Kadyan. But coming out of the hypothesis into a little bit of reality, Pardeep Daya should understand that, you have to score 19 runs in the last over. You can't take singles in the last over. When you have taken the match to the last over, like Dhoni, you have to try. It's not just okay, मैं बस लास्ट तक खड़ा रहूंगा और कुछ ना कुछ होएगा. नहीं, वैसे भी नहीं बोल रहा हूं मैं. आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. And you can't say, no, I am low in confidence. I will not raid only. I will stand there in the mat at the end of the 40th minute. नहीं, वो भी ठीक नहीं है. बिल्कुल. और देखिए नवीन, इसमें भी मेरे कुछ और भी मैं देखिए प्रश्न पूछकर और हमारे शायद दर्शकों के भी प्रश्न अगर मन में हो तो देखिए हमारे पास अभी समय, क्योंकि ये 1 साइडेड थोड़ा सा मुकाबला आपको नजर आ रहा है 4.5 मिनट के आसपास समय. तो देखिए नवीन, 1-2 एस्पेक्ट और मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा. जैसे आपने बहुत बड़ा वहाँ पर एक नाम लिया महेंद्र सिंह धोनी, नो डाउट वो बिलीफ वहाँ पर मिलता है जिस तरह से आप बात करते हैं. परंतु देखिए नवीन, अक्सर आप अगर एक ओवर में 20 रन चाहिए, 25 रन चाहिए, 28 रन तक हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है कि 26 रन भी उन्होंने बनाए थे उमेश यादव के विरुद्ध, मुझे अच्छे से याद है. और परंतु अगर 36 रन से ज्यादा चाहिए हो तो क्या आप जिस तरह से हमने बात की, क्योंकि प्रतीक दहिया के साथ, क्योंकि देखिए अभी अगर लीड देखिए मुतल मैग्नेट्स के पास अभी अगर आपको जो 56 नजर आ रहा है, अगर ये 36-20 होता तो मैं समझता कि प्रतीक दहिया अगर वहां पर मैट पर खड़े हुए हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा वैल्यूबल है. पर अभी जो स्कोर नजर आ रहा है नवीन, वो देखिए थोड़ा सा अब यहाँ से कहना गलत नहीं होगा, परंतु औपचारिकता मुकाबले में बची है. नहीं, agreed for your point. As Sanjay Dull once again gets another fabulous ankle hold on Dakar Daya and puts it down. Okay, let me also tell you this. I understand when you say more than 36 runs or rather 40 runs in the last over. Let us take that hypothetical situation. Okay, 40 runs in the last over. Mahendra Singh Dhoni is there. But do you think Dhoni will take singles? Even in that over? Won't he go for the fight? है ना? Won't he go for the fight?
सी मतलब उसमें से क्या आउटकम क्या होगा? ओके चलो हारेंगे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड वी विल लूज, ओके, बट यू गो डाउन फाइटिंग. That is what I am trying to say. That is what I want to see from Pratik Daya, because he is the biggest man of the entire series, Yuva Kabaddi series. Come on, see, why do you have to put empty raids? Why are you doing? See, I understand it is 40 runs needed in the last six balls remaining. Okay, Dhoni will not take singles, no? Dhoni will not defend the ball, isn't it? यही बात हम नवीन दर्शकों से भी यही बताना चाह रहे थे कि देखिए, अगर वहां पर महेंद्र सिंह धोनी हुए तो वो किसी साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक नहीं देंगे. अगर उनसे देखिए, अगर कोई खिलाड़ी विराट कोहली जैसा हो, या फिर हम देखते हैं अगर कोई टेल एंडर वहां पर मौजूद है, या फिर कोई उससे कम क्षमता रखता हो, अगर वो वहां पर मौजूद हो, और जब इतनी अच्छी फॉर्म और इतने लाजवाब अंदाज में आपने प्रदर्शन किया है, तो वो वहां पर ऐसा कार्य नहीं करेंगे. बिल्कुल आपने सही वहां पर टच किया है हमारे दर्शकों के साथ. नवीन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से भी हमारे दर्शक समझ पाए, और हमारा यही कार्य रहता है बतौर कमेंटेटर की हर एक को सिचुएशन को हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए हमारे दर्शकों के लिए, और वो आपने यहाँ पर बिल्कुल कर दिखाया है कि हमने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो जिस अंदाज में प्रतीक दहिया आप देखिए जरूर वापस जा रहे हैं, और रेड थोड़ा सा शायद एम्प्टी रेड ही करते हुए नजर आए, परंतु बहुत सही पॉइंट्स के साथ आपने एक्सप्लेन किया नवीन. क्रेडिट गोज टू यू ऑल. Yeah, anytime, bro. Anytime with you, it's always fun. But also, let's explain what happened in the previous raid when Ashim Malik was raiding. The defender in a do-or-die raid, though, with Ashim Malik's speed, somewhere I think it was Mohit Kolar, if I'm not wrong. Yeah, he stepped into the lobby, and Ashim Malik could not control his speed. He also stepped into the lobby, and that's why both the teams got 1 point each. But again, Vinay Virender can afford to just relax and have a walk near the midline. But why is Pratik Daya doing that is a big question. Okay, now I think this is the time for us to even take our viewers on fan code just to the summit round that will be beginning on the 30th. That is Thursday. So it's going to be, if you are finishing points at the top of the table in point number 1 and 2, rank 1 and rank 2. Will be very, very useful. And once again, in a do-or-die raid, ankle hold strongly held. Pratik Daya is not putting up even an effort. He's just taking singles. Okay, let's come back to this where the qualifiers 1 and 2, position 1 and 2 will just play one qualifier, and if you win in that match, you are straight through to the finals of Yuva Kabaddi series. But if you lose that match, you wait for the winners of the next qualifier that is going to happen between rank 3 and rank 4. So, if you are finishing on rank 3 and rank 4 in the survival round, once again, you will have a chance, but you will take a longer route. So, you'll have to win one qualifier, then play against the loser of the qualifier 1, and it is going to be tough a little more. If you are finishing 5th and 6th, forget it if you are finishing 5th and 6th. Because you'll be playing an eliminator. So if you lose in that match, the losing team will be eliminated. The 5th or the 6th position is very, very dangerous. And in the last match, I was just giving an example of walking from Manali checkpost to Shimla. It is so far, and that is the end of the match, Arshit. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन की मुकाबला जरूर समाप्त हुआ, और चैलेंजर राउंड से समिट राउंड के सफर तक की आपने बात की कि किस तरह से एक तरफ आप हवा में उड़ते हुए जाएंगे, एक तरफ आप वाया रोड जाएंगे, और एक तरफ आप रेंगते हुए जाएंगे. तो वो एस्पेक्ट है जो हम आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं. 1, 2 पोजीशन, 3, 4 एंड 5th, 6th, और जिस तरह से नवीन हाईलाइट्स की तरफ जाएं, सिर्फ 3 वर्ड्स में आपसे जानना चाहूंगा. हैशटैग हाई वोल्टेज मैच था, कहां पर आज आपको काजीरंगा राइनोज लैक होता हुआ नजर आए? ओनली 3 वर्ड्स अगर आप मेंशन करना चाहें. Pratik Daya should not be the lines. But Pratik Daya for the first point. 2, of course, not starting with Sahil Kumar. So somewhere in the initial moments, you lost out that very important points of getting the raid point from Sahil Kumar, and he was not confident when you don't start with him. And then Manu should come in to support for a long time. See, I understand Pratik Daya having 369 raid points, topmost raider, but there are few days where you will not be in the right form. So you will need that extra second raider, third raider in your team to get you the raid points. So the raid points is the difference.
that is put Kaziranga Rhinos down. See, the defense played well. The defense did not do much of a mistake. But against the set defense of Murthal Magnets, you would need a lot of raid points coming in, which didn't happen. So, see, that is the difference. Look at that. 21 tackle points and just 2 for the Kaziranga Rhinos. Why? Why? Because the defense is so set for Murthal Magnets. And 8 all-outs. So not even 1 against the Murthal Magnets. So yeah, that sums up the story for us. बिल्कुल, ये पूरी तरह से कहानी बयां करते हैं ये स्टैट्स की। सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स, और अक्सर हमने जब ये स्टैट्स देखे तब वहां पर मुकाबले बहुत बुरी तरह से टीम हारते हुए नजर आई है। और आप अब आने वाले समय में काजीरंगा राइनोज से बेहतर देखना चाहेंगे, उनके डिफेंडर से बेहतर देखना चाहेंगे। हितेश कादियान हो, मोहित कलेर हो, आप उनसे बेहतर देखना चाहेंगे। परंतु जिस सेट 7 की आपने बात की, मुरथल मैग्नेट्स ने एक बार फिर से दर्शा दिया है कि उनका हर एक खिलाड़ी परफॉर्म करता है और वो सबको साथ वहां पर लेकर चलते हैं। और जिस तरह से वो मुट्ठी बनाकर चलते हैं वो नजर आया है, उस दृढ़ता के साथ, उस शानदार प्रशंसाजनक प्रदर्शन के साथ इस हाई वोल्टेज मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ मुकाबले को जीता है। और नवीन, ये है आपके सामने अंक तालिका। Yeah, this is something that really will be watched for every single match. Look at that, Kaziranga Rhino struggling at number 4. That's not what they want to be. But Murthal Magnets, Hampi Heroes will be cruising along, as you really put across fabulously well, Harshit. 1, you will go in air ticket. 2, if you are 3 and 4, you will be going in a longer journey on a train journey. And if you are 4 and 5, you will be of course going by road, and that too on a bicycle. So you will have to really understand how this is. This is what I was trying to explain. See, this is what it is. It's a fabulous graphics that we have come up with, and really hats off and kudos to all the team that has put up such a good graphics and able to bring it on screen. That is really nice. So if you are finishing on top 1 and 2, you fly through the finals if you win that match. But if you lose that match, you will have to play qualifier 3. And if you are coming by train to the finals, that is if you are in 3 and 4, so you will have to win the match to play the qualifier 3. And if you lose, you will have to wait to play eliminator 2. So in the eliminator, which is coming by bicycle via road, that is to the finals, if you are 5 and 6, if you lose that match, that's it, gone. The loser is gone, sent back home, backpack, thank you so much, tata, bye-bye. But if you win that, you will be playing eliminator 2. And after that, the journey gets along a little more interesting. So very simple, let's concentrate on the first half of this. That is qualifier 1, 2 and eliminator 1. So that is what is very, very important. Right, that's a fabulous Sunday at the end of it. And tomorrow we have Monday coming up with Tadoba Tigers and Periyar Panthers facing off at 4 p.m. Kaziranga Rhinos will want to have a better performance against Aravali Arrows today and then make it up at 6 p.m. tomorrow. Hampi Heroes and the top of the table Murthal Magnets 1 and 2 clashing at 8 p.m. So that is a blockbuster match coming up at 8 p.m. as well. So thank you so much for now, and Harshit, I will really request you to please go out outside the Sanskar School Jaipur Arena and order 25 biryanis for all my very, very good friends sitting behind the cameras. For sure, Naveen. And I will send you the bill.